Good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome to everybody. Today, we will be focusing on two of the rare neuromuscular diseases, the DMD and SMA. This session is a recurring session which is continuing with other sessions which we had started on August 10th, and this will last till September 3rd. We'll have 20 sessions, these kind of sessions, where we'll have panel discussions and many important information which will be shared for all the healthcare workers, caregivers, patients. I hope you'll be with us for the whole day. I'll now hand over. I'll now ask Dr. Shefali Gulati to take over. Dr. Shefali Gulati is a professor at AIIMS Department of Pediatric Neurology. She has joined AIIMS in 1988 and has more than 25 years of experience and has more than 350 publications, has many awards, international and national awards to her allocates. Over to Dr. Shefali. Thank you, Dr. Kakuli. Last week we had discussed about approach to neuromuscular disorders with a focus on SMA and DMD, and then the multidisciplinary management, which is the current options available. Now we will be today focusing on two aspects, something which is very important: the multidisciplinary approach to these patients, and in the second part, what are the what is the status of the drugs, what are the myths about it and all. So we have an esteemed panel of experts, which I've invited them on board. Dr. Kakuli will introduce them, and then Dr. Gautam will start asking questions. Because Dr. Saurabh has our eminent pediatric cardiologist has to leave for an important official engagement. So the cardiology question we will take first. Dr. Kakuli. Thank you, Dr. Shefali. Today, the topic which we will be covering in this panel is multidisciplinary approach, tertiary level, rural to periphery. We have distinguished panelists as Dr. Naveen, Dr. Sanjukta, Dr. Vishwaroop, Dr. Rahul, Dr. Saurabh, Dr. Bhupendra, and Dr. Siddharth. Dr. Naveen is a professor, Department of Pediatrics and PGIM at Chandigarh, has more than 330 national and international publications. Amongst many of his skills and expertises, he excels in movement disorders, neuroimaging, and neurodegenerative diseases. Dr. Sanjukta De is a pediatrician, consultant at Department of Pediatrics and Neonatology at Kolkata. She is best known for her undivided attention towards patients. She is also a prestigious fellow of Royal College of Pediatrics and Child Health UK. Dr. Sanjukta has many national and international publications to her allocates. Dr. Vishwaroop Chakravarti is an additional professor at Department of Pediatrics, AIIMS. He joined AIIMS as a TM student. His main area of interest are infection, para-infection of CNS, autoimmune disorder of CNS, epilepsy, neuromuscular and neurodegenerative disorders. Dr. Rahul Sinha is a pediatric neurologist at Command Hospital, Chandigarh. His skills and expertise includes demyelinating diseases, neurophysiology, and neuromix. Dr. Saurabh Kumar Gupta is a professor at Cardiology Department at AIIMS Delhi. His main expertise lies in pediatric cardiology and congenital heart diseases. Dr. Bhupendra specializes in spine surgery treatment and has been widely acknowledged for his versatile and patient-centered approach, and presently is working as a senior consultant at BLK Max Super Speciality Hospital. Mr. Priyabrata is a pediatric physiotherapist at District Headquarter Hospital. He has been associated with us in a few of our prior assignments, and he will be joining us with few of the physiotherapy related questions. Dr. Siddharth Saha is a senior pediatric neurologist at RIC in Ahmedabad. I welcome you all, and over to Dr. Shefali. She is going to facilitate the whole panel. Can we have the slides, please? Uh,
Dr. Saurabh had to leave for some urgent work, so we'll start from the question 1 onwards only. Dr. Gautam, yeah. Good morning, everyone. So uh, the first question, we have a child with neuromuscular disorder, say DMD, who all so in this we would like to know who all constitutes the team in planning the multidisciplinary approach of management, and how does it differ between a tertiary care First level question, center Dalai. and a peripheral level care First, center? ये नहीं, So this question would be नहीं directed to नहीं, Dr. Naveen Sankyan, sir. first Sally. Morning all, and thanks for this invitation. So primarily when we look at management of DMD, or for that matter any chronic neuromuscular condition, I think the first and foremost would be a pediatric neurologist and with someone interested in neuromuscular disorders. At tertiary care level, we expect that expertise are developed. And the neuromuscular disorder specialist would form the core primary care provider for the child. So he is primarily involved in assessing the disease, making a correct diagnosis, talking to the family about the drug options, developing a plan for follow-up, regular screening. They have expertise both in neurology and pediatrics, so they take care of the other aspects of childcare like vaccination, nutrition, and general guidance for growth and development during initial years of the disease. Apart from this, he or she is ably supported by a panel of other specialists. Important among them would be a physical therapist, preferably a specialist in physical medicine and rehabilitation. Then we have the cardiologist as a very important because the surveillance for cardiac involvement starts very soon after the diagnosis of DMD, continues till the late ambulant and then non-ambulant state. Then we have the pulmonologist who would initially be screening for pulmonary problems and later taking care of assisted ventilation. We frequently have orthopedic problems, particularly in children who are non-ambulant, so orthopedic specialists with experience in dealing with children with neuromuscular disorder would be an important member of the team. Not to forget the geneticists, who would be very crucial in genetic counseling, prenatal diagnosis, so that we don't have recurrence of the disease in the family. And we also have to be supported by counselors and social workers who take care of the overall coordination between various specialities, and also who can coordinate for advising home modifications which are frequently required for these children. Apart from this, it is said that preferably we should have specialists in endocrinology, pediatric endocrinology, to take care of various endocrinal issues that arise in these children, dental care specialists, psychologists, psychiatrists, and emergency care physicians who would help in problems that these children can face. So primarily, it will be a neuromuscular disorder specialist coordinating with various other specialities to give a lifetime of care. So this is what we expect at the tertiary care level. At the primary care level, the availability of various specialists is very less in India, particularly. So we would expect somebody to take the role of the primary care provider or primary care physician. And this could be primarily a physician with expertise or at least interest in neuromuscular disorders. It could also be a pediatrician with at least a basic knowledge of caring for these children. It could also be a neurologist as the availability may be there. And the bare minimum that he requires is support from a physical therapist and a nutritionist, which are frequently available in many of the primary care settings, at least on a referral basis. And the bare minimum that he needs to coordinate with is a cardiologist, a pulmonologist, and a geneticist. So these are some of the referrals he or she may use in the primary care setting. So we expect them to give at least the primary preventive care, and if they have the expertise, to start with steroid therapy
if they feel confident. So the care team would differ very, very significantly, because at the peripheral level, they are already stretched for a lot of other disorders which they have to take care. So we can only expect a bare minimum of essential services to be provided by at the peripheral level. But at the tertiary level, certainly we are in a position where in most of the bigger cities in India, we can have the multidisciplinary team in place to offer care to these children. Thank you. At primary, secondary or tertiary में मतलब in Hindi actually. Okay. तो यदि आप किसी गांव या किसी छोटी सिटी में रहते हैं, तो बेसिक चीज ये है कि पहले तो डायग्नोसिस बननी चाहिए। डायग्नोसिस मतलब बीमारी का सही निदान होना चाहिए। तो उस चीज के लिए ये जरूरी है कि आप एक बच्चों के स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जिन्हें कि इस बीमारी का पता हो। और इस बीमारी के निदान के लिए सबसे जरूरी चीज एक जेनेटिक टेस्ट होता है, जिसकी फैसिलिटी गांव या छोटे शहरों में तो नहीं है, लेकिन सैंपल भेज के वो टेस्ट आजकल बहुत से शहरों में हो रहा है और बहुत महंगा भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो एक सही तरीके से बीमारी का निदान होना जरूरी है। एक बार जब बीमारी का पता लग जाए तो डॉक्टर से ये समझना जरूरी है कि कैसे ये बीमारी दूसरे बच्चों में ना हो पाए। तो इस बात की जानकारी अपने डॉक्टर से जरूर लें। तो इसमें भी बच्चों के स्पेशलिस्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं। और ये दो चीजें सबसे जरूरी हैं, जो कि जब भी आपके बच्चे को तकलीफ हो जिसमें मांसपेशियों की कमजोरी हो, तो ये सबसे पहले और सबसे जरूरी दो स्टेप हैं। इसके पश्चात बच्चे की मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने के लिए और वो अकड़न उनमें ऐसी ना आ पाए जिससे कि वो चलना फिरना बंद कर दें, इस चीज के लिए जरूरी है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट जो बहुत से छोटे शहरों में अवेलेबल होते हैं, उनसे सलाह लेके बच्चे के लिए एक प्लान बनाया जाए, सीखा जाए कि कैसे उनके स्ट्रेचेस किए जा सकते हैं। आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो यूट्यूब पे भी बहुत से वीडियोस हैं कि कैसे ड्यूशेंस मस्कुलर डिस्ट्रोफी में स्ट्रेचेस किए जाते हैं। तो वो यूट्यूब वीडियोस देख के और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेके वो चीज शुरू की जा सकती है। अगर आपके बच्चों के स्पेशलिस्ट इस चीज के जानकार हैं कि कैसे स्टेरॉइड की लंबी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो ये चीज भी आप गांव या छोटे शहर के लेवल पे शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब स्टेरॉइड शुरू करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है ताकि वजन ना बढ़ पाए और इन्फेक्शंस ना हो, वैक्सीन्स टाइम पे मिले और हड्डियों में कमजोरी ना आ पाए, या बाकी साइड इफेक्ट्स जैसे जो स्टेरॉइड्स के होते हैं उनसे बचने के लिए केयरफुली मतलब बड़े ध्यान से ये दवाई देनी पड़ती है, जिसके लिए जरूरी है कि आपके डॉक्टर जो हैं इस चीज के लिए सक्षम हों। आपके डॉक्टर जैसे गांव या छोटे शहर में कई बार हार्ट के स्पेशलिस्ट नहीं होते, या लंग्स के स्पेशलिस्ट नहीं होते, या जेनेटिक्स के स्पेशलिस्ट नहीं होते, तो अक्सर गांव से थोड़े बड़े शहरों की तरफ रेफरल किया जाता है इन चीजों के लिए। तो बीच बीच में जैसे 6 महीने में एक बार या साल में एक बार इन स्पेशलिस्ट के पास जाके आप अपने बच्चे की हृदय और उसके लंग्स या फेफड़ों की जांच कराई जा सकती है। और इससे जो है बच्चे को एक बेसिक केयर मिल सकती है, उसकी चलने की क्षमता ज्यादा देर तक बनाई जा सकती है और इस बीमारी से बाकी बच्चों को भी ग्रस्त होने से रोका जा सकता है। अगर आप किसी थोड़े से बड़े शहर में रहते हैं तो आपको अक्सर पीडियाट्रिशियन या बच्चों के स्पेशलिस्ट तो मिल ही जाते हैं, बट बच्चों के न्यूरो के स्पेशलिस्ट मिल सकते हैं जो कि आपके बच्चे की बीमारी का निदान और उसकी बीमारी की ट्रीटमेंट भी आगे कर सकते हैं। तो अक्सर ये इस बीमारी में ना केवल बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट बट फिजिकल थेरेपिस्ट, हार्ट के स्पेशलिस्ट, लंग्स के स्पेशलिस्ट
ऑर्थोटिक्स जो खास तरह के शूज बनाए जाते हैं इन बच्चों के लिए, उनके स्पेशलिस्ट, फिर जेनेटिसिस्ट जो ये बताते हैं कि अगले बच्चे में कैसे इस चीज को रोकना है और प्रेगनेंसी में कैसे चेक करना है, और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, जैसे काफी बार इन बच्चों की हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो इन सारे स्पेशलिस्ट के साथ आपके जो पीडियाट्रिशियन है या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो अलग अलग स्पेशलिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके आपके बच्चे की केयर करते हैं। तो काफी बार इन बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने शहर में किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं ये जान पाएं, और काफी बार छोटे शहरों में या छोटे गांव में आपको अगर बच्चों के स्पेशलिस्ट मिल जाएं जिन्हें इस बीमारी की जानकारी है तो वो ये सब कर पाते हैं। लेकिन एटलीस्ट जो टाउन्स या बड़े शहर हैं उनमें पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके इस बीमारी का निदान और इसकी सही उपचार किया जा सकता है ताकि बच्चे का जीवन सुखद रहे। Good morning, ma'am. Thank you for having me. Sure. Thank you. I'll speak in English first and try my Hindi a little later. As my previous speaker has said, the most important thing is a multidisciplinary approach. Being a pediatrician with special interest in pulmonology, I end up having patients who are actually very unwell when they come to me. So they have been diagnosed with DMD for some time. They are undergoing physiotherapy according to the parents. They are doing all the correct things according to the parents, but it's still they still are not well. So what is the problem? We know, as doctors, we know, and many of the patients and the parents also know that the DMD goes through 3 phases. The ambulatory phase, where the child is moving around and able to ambulate, and a non-ambulatory phase where the child is more or less confined to the wheelchair, and a late non-ambulatory phase where the child is completely confined to bed. So the neuromuscular disease patients are living longer. So their requirements are also changing. So we have to be in tune with the requirements and the fact that we tell the parents time and again, as very importantly, they should have one point of contact, one pediatrician or one neurologist or one person with special interest in neuromuscular disorder who keeps on hammering to them that how important it is to do the basic things right from the very beginning. If you don't do the basic things right from the very beginning and you're in the late non-ambulatory phase, then what are we going to do? So basically, what are as a we run neuromuscular clinics in our hospital, and I was surprised when I came back from the UK that this was the first ever multidisciplinary neuromuscular clinic to be thought about in entire Eastern India. The reason being that we need 5 or 6 people to look at a child when they come to the clinic. And when a child is coming who is partially ambulatory or non-ambulatory at all, we need to do certain things. So for an ambulatory child, we have to do yearly forced vital capacity. So spirometry is essential for all DMD patients when they come to the clinic. So physiotherapy chal raha hai, medicines chal raha hai, aap steroids de rahe ho. No, that is not the only thing. आपको ये भी चाहिए कि आप अगर न्यूरोमस्कुलर क्लिनिक चला रहे हो तो you have to have the facilities of a spirometry available. So a forced vital capacity, a spirometry,
done by expert who can actually interpret the difference in values is very important. So every child coming every 3 to 6 months should have one. When you're in the ambulatory phase, if you have it once a year, it's fine. When you're in a non-ambulatory phase, you should have it at least twice a year. And in the late non-ambulatory phase, you should have it as frequently as you can possibly do it. But possibly at that time, the child is unable or the adult is unable to do the FVC. So we have to realize that we have to also do sleep studies on these children. So as you have said, nocturnal hypoventilation, needing of non-invasive ventilation is very important. How do we understand who needs that? So अगर हमको पता करना चाहिए कि किसको चाहिए ये नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, किसको रात में प्रॉब्लम हो रहा है, किसको स्लीप एपनिया हो रहा है, then you may have to do sleep studies. So sleep studies possibly are mandatory once a year for all these patients, ambulatory in the non-ambulatory phase. In ambulatory phase 2, in the 5 to 6 year, 7 year age groups, I prefer to start doing a yearly sleep study just to catch on to the patients who are developing problems. So, and abhi, because of COVID, everybody has a pulse oximeter. So it's not so difficult कि हम पेरेंट्स को बताएं कि पल्स ऑक्सीमीटर लीजिए, आप देखिए कि अगर बच्चे को अगर प्रॉब्लम भी नहीं महसूस हो रहा है, what is the saturations while the child is sleeping, what is the saturations when the child is doing physiotherapy. So these are the very important things to tell the parents को on board लेना चाहिए. We have to tell the parents हम क्या किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि most of the parents who come to us, they are saying we want a medicine for the child. ये medicine मिल रहा है, this is available, that is available, but ultimately the child is not going to do well unless the respiratory problems are addressed. So sleep studies, that's the next important thing. And very, very important are the pneumococcal vaccines and the yearly influenza vaccines. As Dr. Gulati said that I am having bad patients in ICU, we are having an outbreak of swine flu. At this point in time, I'm seeing quite a few swine flu patients, and it's not my neuromuscular patients only, but normal patients who are absolutely going into ARDS and respiratory failure. So we must save our neuromuscular patient from these problems. And as for the respiratory devices available in the country, I'm sure the physiotherapists will go on to the details of it. But as the muscle weakness and stiffness increases in children with neuromuscular diseases, we have to teach them while they come to clinic what is the assisted respiration techniques for the proximal airways and for the distal airways. So the first and foremost, physiotherapist who knows and understands what respiratory physiotherapy is all about is a need of the day for the neuromuscular clinic. We have to teach the parents how to teach the children to do stacking breathing, how to take inspiration and not expire. So there are certain devices that you can actually improvise. So there's a lung volume recruitment bag that is marketed by Breers Medical in Stratford upon Avon, and where you can only inspire and not expire. It's like an ambu bag. You can inspire and not expire. That is also available on order. And apart from that, we also have cough assisted devices. These are the two most important things that you can find in the market quite easily in India. But apart from that, हम ऐसे बच्चे भी देखते हैं कि उसके लिए cough assist device, buying all this is a thing of a dream. But we can teach them how to manage proximal airway techniques and distal airway techniques by various respiratory maneuvers. I think if I try to explain all of that, I'll take up a lot of time and leave that to the physiotherapist. But एक बात मैं समझाना चाहूंगी for all the parents and healthcare providers present in today's meeting, that the respiratory part of neuromuscular diseases is one of the most important things that we have to look after to prevent these kids from getting into hospital. So unless we teach the parents why and what is important, only then we have reached. Because
from early childhood, what I tell the parents, when I try to explain to them stacked breathing, controlled inspiration, controlled expiration, small things I tell the villagers, आपके पास conch shell है? Can you blow a conch shell? Have you ever tried? So all these breathing exercises should be started from early on in life. And then we go on to the assisted devices. Regular sleep studies are important, as I said. Measurement of forced vital capacity, measurement of peak cuff flow, and these are the part and parcel of a neuromuscular clinic so that we achieve the goal we want to achieve. Talking of SMA children, so as I have already said for DMD patients, so one of the most important thing is to ensure that they are taking their vaccinations regularly. So इन्फ्लुएंजा निमोनिया वैक्सीन, ये वैक्सीन तो लगाना ही चाहिए. हमको ये समझना चाहिए कि when children, parents are there in the periphery, उसके बाद यही they are one thing ingrained in their head that they have the government schedule and that's all that is needed. So the extra that is needed has to be explained to them. And as I said, just like in DMD, we have to do the sleep studies and we have to monitor their peak flows, the cuff techniques, etc. But one of the most important things that there have been a lot of ifs and buts about it, but I do personally use it. There has been certain studies also. I use oral aspirin to my patients with spinal muscular atrophy, and there has been studies showing that aspirin given orally can increase the increase the performance of muscles of respiration. So this is one thing that I use. Also, very important, from early on when they're in the ambulatory phase like SMA2, it is important that every chest infection is treated adequately and well with inhaler therapy. The parents are taught correct inhalation technique. Inhaler कैसे use करना चाहिए, घर में कैसे maintain करना चाहिए. सर लंग्स इन्फेक्शन तो रिकवर हो जाता होगा? बहुत होते हैं. हाँ सर, बहुत होते हैं. Yeah. So what I was talking about spinal muscular atrophy is many of the things are quite similar to Duchenne regarding monitoring of the child. Lekin SMA में there are certain papers and certain reports, and I use it personally for my SMA patients. I use aspirin orally also. There has been reports and studies to show that it can increase the function of intercostal muscles. So that is one thing. Treating them right, inhaler technique, treating every respiratory infection effectively and well. अच्छे से inhaler technique सिखाना चाहिए. SMA type 2 patients can usually use inhalers. When I'm talking of SMA type 1, then we have to think of nebulizer therapy, and that also we have to teach them properly how to use home nebulization at home, preferably with an oxygen supply and oxygen concentrator. So सारे parents को ये समझना चाहिए that nebulizer is not the first option. Inhaler is the first option, especially in SMA type 2 patients. SMA type 1 is a different ballgame altogether. And also it is important how to help with assisted cuffing devices, how to do mucosal clearance, how to note for saturations dipping in the night. And the best
obviously, when SMA children become unwell and through the night their saturations are dipping, and sleep studies show that they need some support through the night, that is the first phase. Non-invasive positive pressure ventilation through BiPAP is the choice. One must understand CPAP does not work for them, and there are misconceptions about what to use and how to use, but that is a different aspect of it altogether. But non-invasive positive pressure ventilation at night is the first option when the children are needing it, and this gives them daytime alertness, their saturation improves. And when the children become really non-ambulatory, they might need daytime non-invasive ventilation as well. Another thing to remember is SMA children develop scoliosis, severe scoliosis, and that compromises lung volume. So spine agar kharab ho, तो अगर आप नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन रात में देंगे भी, you will not get the desired result. So at a point in time when the Cobb's angle has increased to a degree, more than 40 degrees, 60 degrees, so there are ways of assessing this. So at that time, we have to consider spinal surgery so that lung volume is not compromised. So good nutrition, regular immunization, proper use of inhaler technique, nebulizations when needed, sleep studies yearly or twice yearly to detect those patients who need nighttime support with non-invasive ventilation. Later on, they might be needing daytime support as well. And uske saath saath spine ka ख्याल रखना. Ortho say we have to take the correct opinion so that we can do the spinal surgery at the earliest when needed. I think I have covered the main points. If there are any queries, I can answer. Hello, am I audible? Good morning to all. It's a very important question actually, because of the non-ambulatory condition of the patient. It's the bone getting osteoporosis very easily, and the risk of fracture in this kind of a patient is very much high. It's almost like 5 to 6 times higher in compared to the normal age group. So there is no particular guideline in this type of cases, but definitely if there is a fracture because of the osteoporosis and the patient especially on the glucose like the steroid, we have to start anti-absorptive treatment with the anabolic anabolic treatment, anabolic steroid treatment actually. Hello. And the surgical management of the fracture part, that is a different issue. Mhm. Sir? Start video. Thank you, sir. Okay. So in Any this special patient, precaution, sir? Any special precaution, Dr. Bhupendra, DMD के surgery में और वैसे? no, there is no very special precaution, but it has to be like it has to prevention of the fall if the patient is non-ambulatory from the chair, and if the ambulatory with support, that we have to give the prevention. I mean, बच्चे को गिरने से बचाना है actually. That's it. That is the only one.
And the other treatment, that is the pharmacological treatment, we have to give the the patient who is very prone for the fracture. So we have to keep the good nutrition and the proper exercises of the part. That's it. डॉक्टर भूपेंद्र एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जो अभी डॉक्टर संजुक्ता बता रहे थे अगर स्कोलियोसिस होता है एसएमए के पेशेंट्स में राइट तो व्हेन डू यू वांट टू इंटरवीन सर्जिकली मतलब और मतलब एंड व्हेन डू यू वांट टू गेट देम टू हैव ब्रेसेस एंड व्हेन सर्जिकली आई मीन व्हाट आर द इंडिकेशंस उसके लिए doctors have already told us that the Cobb's angle is around 40 or less than 40, then we can manage the patient on the with the conservative management like exercises and the brace therapy. But if it is increasing at the time of presentation more than 40-45 degree of scoliosis, and in the follow up it's progressively increasing, then we have to do some active intervention for the spine to prevent further progression. बिकॉज एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि दे ऑलरेडी हैव compromise with the respiratory muscles so we have to be very careful in the patient selection and their supportive care in the thing thank yes and it is particularly like it's a kind of the race between the lung maturation and the progressive increase in the Cobb's angle. So we have for the spine if the child is with the immature lung, then we have to do the procedure which is not like final definitive procedure, like the spinal fusion procedure. So we have to apply growth rod and all these things till get some lung maturation, and later on here we can do the final fusion for the spine. Thank you, Dr. Bhupendra. Thank you so much. Priyavada, thank you so much for joining. Dr. Gautam will ask you because besides the question he asked you, I want to before this I want you to tell me how will you plan a program for talking managing these patients from OTPT point of view for a DMD patient. And besides this, then the other question. So the question is, what are the options available in terms of orthosis or assist devices for a non-ambulatory child with neuromuscular disorders? But before that, what is the plan of OTPT you like to make for any child? What are the important things you want to keep in mind, Priyavata, and how will you make a plan? Priyavata? Hello. Yeah, Priyavata. Am I audible? Yes, you are audible. You're audible, Priyavata. Okay. Good. Hello. Good morning, all of you. And this is really very much. This is a very much great privilege for me to be the part of this program. And now, as per the question of Madam, what will be the planning for the treatment of or management of DMD or other neuromuscular problems in children? So first, the detailed assessment is very much essential for any kind of neuromuscular cases in children. Mainly the functional abilities and the status of the patient child, whether he is in ambulatory phase or non-ambulatory phase, and also we have to assess the pulmonary aspect of the child, and also we have to take the help of other healthcare professionals for the pulmonary function tests and sleep tests also. And according to the assessment only, we have to treat, and we have to also take care of the drugs the children they take. That means mainly in the neuromuscular diseases,
steroids are prescribed, and we all know that what is the complications of steroid therapy. We have to take care of that while planning the treatment, mainly in musculoskeletal cases. Musculoskeletal, while treating musculoskeletal system, while stretching the patient, if we will apply more force, then it might cause some kind of fractures and all in the bones and all. And also we have to focus on the preventive aspect, instead of focusing on the treatment aspect. In case of neuromuscular conditions, main issue happens with the musculoskeletal aspects of the child. There will be muscle contracture, there will be osteoporosis of the bones, and there will be less decrease in range of motion of the joints. So we have to plan according to that, and also we have to take care of the respiratory aspects, how to drain the mucus from the lungs, and how to remove it from the upper respiratory tracts, so that we can prevent the recurrent pulmonary infections. And also in the late non-ambulatory stage, we should focus on the quality of life of the patients, how to decrease the chances of development of decubitus or pressure ulcers, and how to position the child so that there won't be more stress on the pulmonary system, and how to prevent the development of pulmonary complications if the child is completely bedridden like that. Thank you so much, Priyabrata. And what about the ortho? Any other anything you want to specifically mention? ये assist devices वगैरह के लिए कैसे indigenize करना है, कब orthosis कब use करना है? Anything you want to say add on? This is especially for DMD. हाँ जी मैडम, एक्चुअली मैंने पहले से जो बताया कि जो समस्याएं हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमको जरूरी है कुछ असिस्टिव डिवाइस हो या ऑर्थोसिस हो, उसको प्रिस्क्राइब करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन वो उसका कुछ डिमेरिट्स होता है, उसका कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है, जैसे कि ड्रग्स का भी जैसे कॉम्प्लिकेशंस होता है, उसी तरह कुछ भी अगर हम एक्सटर्नल डिवाइसेस देते हैं, सपोर्टिव डिवाइस देते हैं, उसका मेन कॉम्प्लिकेशंस ये रहता है कि externally we are supporting the musculoskeletal system, and as it is supported externally, there will be less muscular function. The stabilization, mainly the stabilization and mobilization role of the muscle get reduced due to the external support of orthosis or any external device. So what happens? There will be diffuse muscular atrophy. If diffuse muscular atrophy will be there, then it will not be that much. Hello, is it audible? हाँ प्रियव्रता, थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा कट रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है पर थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रहा है। इज योर सिग्नल? जी हाँ अभी बेटर है, आप माइक को पास ले लीजिए, इट विल बी बेटर। हाँ प्रियव्रता या जी मैडम। तो जो सपोर्ट मिलता है मसल को, तो मसल का एक्टिविटी कम हो जाता है, तो डिफ्यूज एट्रोफी हो जाता है मसल का, तो मसल का वो जो स्टेबलाइजिंग एस्पेक्ट जो है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। तो और दूसरा बात ये होता है कि अगर हम देखेंगे कि वो जो एक्सटर्नल डिवाइस जो होता है, ऑर्थोटिक्स होता है, तो उसको कितना समय तक देना जाए, तो स्टडी ये बोल रहा है, कुछ स्टडी की उसको कम से कम मतलब बच्चा जब
बैठता है, मतलब बेड से उठता है तो तभी से पहनाना चाहिए, जितना समय वो बैठेगा उतना समय पहनाना चाहिए। लेकिन वो तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और बच्चा के लिए कंफर्टेबल भी नहीं है। तो और दूसरा बात ये होता है कि स्टडी ये कहता है कि हाँ, जो जैकेट पहनाना है उसको लाइट प्लास्टिक जैकेट पहनाना है, वो कवर करना है कहाँ से, पेल्विस से लेके एक्जिला तक, आर्म पिट तक कवर करना है, सर्कमफ्रेंशियली वो उसको कवर करना है। अगर ऐसा होगा तो ये कंप्लीटली रिड्यूस करेगा किसको, चेस्ट एक्सपेंशन को रिड्यूस करेगा। और हमारा जो चीफ मसल है, डायफ्राम है, दो डायफ्राम, वो डायफ्राम भी उसका फंक्शन रिड्यूस होने के साथ साथ जो हम जो बोलते हैं फोर्स्ड एक्सपिरेटरी टेक्निक्स जो होता है, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी एक्टिविटी जो होता है, मतलब कॉपिंग हो, हॉपिंग हो, वो चीज भी एब्डोमेन मसल का वीकनेस के कारण से कम हो जाता है। तो म्यूकस जमा हो जाता है लंग्स के अंदर, तो ये ज्यादा जमा होगा तो ये तो कॉम्प्लिकेशन शुरू करेगा, मतलब रिकरेंट निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन होने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से, मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चा को ये जो कॉम्प्लिकेशन स्कोलियोसिस हो, ये डेवलपमेंटेशन ना हो, हम इसके ऊपर अगर ज्यादा कंसंट्रेट करें तो अच्छा रहेगा। और अभी कुछ ग्राफ्स ब्रेस एक है, वो भी उसका कॉम्प्लिकेशंस भी यही दिखाता है कि वो क्या करता है कि रेस्पिरेटरी जो मेन चीफ रेस्पिरेटरी मसल है और एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल है, वो दोनों का कैपेसिटी कम कर देता है। तो इसलिए हम उसको यूज करने से अच्छा है कि कैसे ये स्कोलियोसिस डेवलप ना हो। तो इसलिए जो नॉन एम्बुलेटरी चिल्ड्रन है वो व्हील चेयर बाउंड होते हैं, तो उन लोगों के लिए हम कस्टमाइज व्हीलचेयर करें, जैसे कि उनका प्रॉपरली लैटरल ट्रंक सपोर्ट रहे और बच्चा जो सीट में बैठेगा वो सॉलिड हो, ताकि पेल्विस का अलाइनमेंट पैरेलली हो ग्राउंड के साथ, तभी एक पेल्विस ऊपर हो जाएगा, अप स्लिप हो जाएगा, दूसरा डाउन स्लिप हो जाएगा। तो ऐसा होगा तो लैटरल कर्वेचर डेवलप होगा स्पाइन में। इसलिए हम लैटरल ट्रंक सपोर्ट देने के साथ साथ हमारा जो सॉलिड सीट को हम ऐसे अरेंजमेंट किया जाए ताकि पेल्विक का अलाइनमेंट ठीक हो। तो पेल्विस का अलाइनमेंट बिगड़ेगा तो हमारा स्पाइन का अलाइनमेंट भी बिगड़ेगा, लैटरल कर्वेचर डेवलप होगा। तो और क्या है कि जब जी जी मैडम, नहीं आप बोलो बोलो कंटिन्यू। हाँ जी, तो और चेयर का जो वेट होता है ना, जितना चौड़ा रहेगा, जितना वाइड रहेगा, तो दैट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ लैटरल कर्वेचर, डेवलपमेंट ऑफ लैटरल कर्वेचर। तो वो हम कोशिश करेंगे कि उसका जो विड्थ है वो जितना कम हो सके, जितना कम होगा वो ट्रंक को भी उतना सपोर्ट करेगा और अपना पेल्विस को भी उतना सपोर्ट करेगा, ताकि ट्रंक और पेल्विस वो एक अलाइनमेंट में रहे। तो बेटर है कि हम बाकी पोजीशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, और अगर नॉन एम्बुलेटरी है तो बच्चा को उसका कस्टमाइज्ड बनाए व्हीलचेयर। और ये तो स्पाइनल ऑर्थोसिस के बारे में हो गया। अगर हम देखेंगे कि पेरिफेरी में अपेंडिकुलर स्केलेटन के बात अगर हम बोलेंगे तो हम देखेंगे कि पहले वो कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है टाइटनेस के लिए, कि काफ मसल। तो काफ मसल को हम बता का सिग्नल आ गया। डॉक्टर भूपेंद्र, यू वर सेइंग समथिंग। Hello. Yeah, Dr. Bhupendra. Madam, Yeah. Dr. Priyavada has pointed out the very important facts. जैसे ये ऑर्थोसिस है, इट्स बेसिकली हमको डिजीज समझनी पड़ेगी। दिस डिजीज इज बिकॉज न्यूरोमस्कुलर कॉज। सो इसमें डिस्पाइट ऑफ द ऑर्थोसिस लेटर और सूनर जो है, जब रेस्पिरेटरी कंडीशन जब डिटोरिएट होती है तो इसमें ऑर्थोसिस बहुत ज्यादा काम नहीं आती है। तो एंड ऑर्थोसिस कॉज सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, like the main issue is ऑर्थोसिस द रेस्पिरेटरी इश्यूज, जैसे कि डॉक्टर प्रियंका ने कहा है जी जी कि हमको एड्रेस करना चाहिए। बट once the deterioration of the spinal curvature is rapid or it's progressive or the respiratory issue is there,
So उस कंडीशन में either ambulatory और non ambulatory कोई भी patient हो, it we has to manage it with the surgical options. Okay, क्योंकि हम उसमें ऑर्थोसिस हम बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हैं. नहीं कर सकते जी 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 और ज्यादा जितना समय एक्टिव आवर जो रहता है वो अगर ज्यादा बढ़ेगा ना तो चांसेस ऑफ गेटिंग द लैटरल कर्वेचर विल बी लेस. जैसे कि अगर ज्यादा समय तक लेटा रहेगा बच्चा और प्रॉपर पोजीशनिंग हम नहीं करेंगे, पोजीशन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ मसल्स डेफिनेटली दे विल गेट टाइटेंड एंड सम मसल्स विल बी मोर, जो एंटागोनिस्ट मसल है वो ज्यादा वीक हो जाएगा. तो ये तो हाँ. और दूसरा बात ये है कि अगर जो बच्चा जो एम्बुलेटरी रहता है ना, जब वो खड़ा रह पाता है और चल पाता है उस समय पे अपने आप एक लॉरोटिक कर्वेचर डेवलप हो जाता है, कॉम्पेंसेटरी लॉरोटिक कर्वेचर डेवलप हो जाता है ड्यू टू वीकनेस ऑफ द ग्लूटियल मसल्स. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. ड्यू टू वीकनेस ऑफ द ग्लूटियल मसल्स बेसिकली वो कॉम्पेंसेट करके हाँ जी जी वो ट्रंक एक्सटेंशन करके खड़ा रहता है. तो जब ट्रंक एक्सटेंशन होता है देयर विल बी अप्रोक्सीमेशन इन द फैसेट जॉइंट्स. तो फैसेट जॉइंट लॉक होता है, तो जब फैसेट जॉइंट लॉक होगा तो लैटरल कर्वेचर डेवलप होना थोड़ा चांसेस कम होता है. तो इसीलिए हम अगर उसको दिन में कम से कम 3-4 घंटा एक्टिव आवर उसको दे बच्चे को, मतलब 3 घंटे के लिए उसको खड़ा कराए और चलाए तो ये भी मतलब बहुत फायदेमंद होता है. बिल्कुल अगर बच्चा स्टेप्स नहीं ले पा रहा है, अगर बच्चा स्टेप्स नहीं ले पा रहा है तभी हम उसको सिर्फ स्टैंडिंग के लिए बोले कम से कम 1 घंटा उस समय पे उसको खड़ा करना है एक दिन में. बिल्कुल ठीक है. सो टू कंक्लूड ना, तो बेसिकली हमारे को स्ट्रक्चर्ड मतलब एक्सरसाइज वगैरह का पूरा प्लान करना है, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो जाके जो ब्रेसेस वगैरह का ये भी देखना है कि उससे आपका डिसयूज एट्रोफी हो जाता है, जो उसकी अपनी पावर है वो भी प्रॉब्लम हो जाती है. तो वी हैव टू बी केयरफुल एंड द प्रॉपर पोस्चरिंग एंड ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अलाइनमेंट. तो प्लान पूरा करना है OTPT के साथ, है ना. दैट इज व्हाट द आई थिंक मैसेज विल गो. एंड मतलब जब लोगों को लगता है कि ब्रेस से डिसयूज एट्रोफी होके भी है, तो वी हैव टू बी, है ना, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. हाँ है ना, बोलो हाँ हाँ बोलो डॉक्टर प्रिया बोलो. जी जी या जी डॉक्टर भूपेंद्र, एनीथिंग यू वांट टू ऐड, एनीथिंग टू दिस? पीटी मैडम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पीटी और ओटी इनके साथ जो प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिस्ट होते हैं ना, इनका मतलब रहना बहुत जरूरी होता है, ताकि हो सके वो कुछ दूसरा कुछ मतलब मॉडिफिकेशन कर सके ताकि हमारा जो पर्पज भी फुलफिल हो पाए और उसका कॉम्प्लिकेशन भी कुछ ज्यादा ना हो. मतलब तो मेन ये है कि सबको डिस्कस करके करना है, होलिस्टिकली देखना है. तो बेसिकली आप पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, OT-PT, ऑर्थोपेडिशियन सबको इकट्ठे बात करके ही आपको प्लान करना है, राइट. तो अपने आप जाके नहीं जाना है. कोई भी चीज हम असिस्टेड डिवाइसेस कर ले तो उनका अपना प्रॉब्लम भी हो सकता है, राइट. दिस इज द मैसेज, है ना. या कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? थैंक यू डॉक्टर प्रिया. विप्सा, धन्यवाद मैडम. थैंक यू सो मच. विप्सा, SMA के लिए एनीथिंग स्पेसिफिक यू वांट टू से फॉर द प्लान, क्योंकि प्रिया ने ज्यादा DMD के बारे में बोला है, और उसके बाद गौतम विल आस्क यू अबाउट. बोल. So what are the recommendations for physiotherapy or exercise in terms of frequency, intensity in a child with DMD and SMA? Hello, good morning. Actually, in case of DMD also, as Priyavrata has pointed out, that positioning and the main concern is the prevention of the contracture basically. SMA, we have a 3 type of SMA, type 1, type 2 and type 3. On the basis of that, we have a different kind of plan of the physiotherapy plan basically. In type 1, we basically focus on the respiratory issues and the positioning of the patients. I'm audible? Yeah. Continue. Yeah. But in type 2 and type 3, basically, depending on the outcome measure, like on a chop in tang, on the high, we get a gross motor delay. We design a program. On the basis of that, we decide the frequency. In DMD and SMA, what is the difference between basically SMA and DMD patients? In DMD patients, the muscle get fatigued very early as compared to SMA type 2 and SMA type
3. So we need to have a low frequency exercises in case of DMD as compared to SMA. So basic main focus of the treatment is on the basis like we have to decide what is the positioning we are giving. As Priyaberta pointed out that in DMD lateral curvature problem is also rely on the SMA patients also, because due to the muscular weakness they get this contraction in the lower limb like knee flexion contractures or and a shoulder contracture. So we can use not a static, we can use some kind of slings or something to maintain the position of the patient. So what will the frequency will, the question is what is the frequency? So I will say ideally we should have in a case of SMA type 2 or type 3, we have at least 1 hour daily exercises. Depending on that, we have active ROM exercises, passive ROM exercises, and respiratory exercises. And Vipsa, regarding the frequency, हम कितनी बार बोले practically, because so we have to have at least 3 times a week we should have exercises, and we have a passive stretching daily for at least 20 minutes of each joint to maintain the muscle extensibility of each muscle. थैंक यू प्रियबता, यू वांट टू ऐड कि डीएमडी के पेशेंट में आप कितनी बार बोलेंगे दिन में करने के लिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग? बिकॉज कई बार कई लोग इतनी बार बोल देते हैं करने को विच इज नॉट प्रैक्टिकल. सो विच इज एन ऑप्टिमल काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्रियबता, फॉर डीएमडी? प्रियबता? हाँ हेलो मैडम. हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज जो आप प्लान बनाते हो, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डू यू एक्सपेक्ट द पेरेंट्स टू डू इन अ डे? एक्चुअली मैडम अगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बारे में अगर बोला जाए तो हेलो, मेरा बात सुनाई दे रहा है मैडम? हाँ जी, सुनाई दे रहा है या जी. अगर मतलब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बारे में अगर देखा जाए तो ये कुछ किताब में ऐसे लिखा है कि 10 to 30 रिपीटेशंस हेल्ड फॉर 5 to 10 सेकेंड. ठीक है, थैंक यू प्रियबता. रिपीटेशंस होल्ड फॉर परफॉर्म at least once and preferably twice daily. तो आपने बोला एक टाइम पे कितनी बार, वो कट रहा था वहां 10 to 30 repetitions held for 5 to 10 seconds. हाँ, and twice a day. हाँ, ये सिर्फ अगर सिर्फ काफ मसल के लिए हम देखें, सिर्फ काफ मसल टाइट है अभी, तभी ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है. 10 से 30 रिपीटेशन करना है और 5 to 10 सेकंड होल्ड करना है. या नहीं चलो, और ये दिन को एक बार, प्रिफरेबली 2 बार. नहीं, थैंक यू प्रियबता. हाँ, अगर कंप्लीट योर स्टेटमेंट प्रियबता. Okay, we can thank you. So we go on to the cardiology question. Dr. Saurabh had to go for an urgent he had to go for an urgent procedure for the patient. So I will be requesting, he has sent the reply, which anyway we all know, but I'll request my fellow faculty colleague Dr. Vishwarup to answer this. Dr. Gautam, please ask. Yeah. So, sir, how early should a cardiologist be involved in the multidisciplinary team of management in a child with DMD, and what are the strategies to delay or manage the cardiac complications? So, sir, we would like you to address on the feasibility at the tertiary care level and at peripheral level. Thank you, ma'am, and thank you, Dr. Gautam. So, we all know that DMD एक मांसपेशी की बीमारी है. तो हार्ट भी सिग्निफिकेंटली मांसपेशी का बना हुआ होता है, तो इसीलिए हार्ट पे भी डीएमडी बीमारी का असर आता है. तो शुरू में उसके लक्षण नहीं नजर आते हैं, सिर्फ जांचों से पता लगता है, एंड इवेंचुअली जब बच्चा सेकेंड डिकेड में जाता है 10-11 साल के बाद सिम्टम्स भी नजर आने लगते हैं. तो हमारा जो फोकस होता है वो इस पे होता है कि कितना जल्दी हम उस प्रॉब्लम को पिक कर पाए और उसको इलाज करें, ताकि बच्चे का क्वालिटी ऑफ लाइफ जितना है वो इम्प्रूव कर पाए. तो आमतौर पे 6 साल के आसपास बताया जाता है कि हार्ट इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है. तो कार्डियोलॉजिस्ट
6 साल के आसपास इन्वॉल्व हो जाना चाहिए डीएमडी के मैनेजमेंट में। और उसमें ये होता है कि शुरू में 10 साल तक हम हर 2-2 साल पे इकोकार्डियोग्राफी या कार्डियक मॉनिटरिंग करते हैं, और 10 साल के बाद वो हर साल होता है। तो जब हम स्क्रीन करते हैं, स्क्रीन का मतलब है कि बच्चे में लक्षण नहीं है, लेकिन हम जांचों में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हार्ट में असर आना शुरू हो गया है कि नहीं बीमारी का। तो हम करीब 7 साल की उम्र से शुरू करते हैं, एंड गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो हार्ट का एमआरआई होता है। बट वही है कि हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि एनेस्थीसिया यूज हम कम से कम करें इन बच्चों में, क्योंकि बहुत बार एनेस्थीसिया से रिकवर करने में इनको दिक्कत होता है, क्योंकि इनकी लंग्स की मांसपेशियां भी कमजोर होता है, तो एनेस्थीसिया से रिकवर करने में टाइम लेते हैं। तो अगर हम एमआरआई कर रहे हैं 7 साल की उम्र के बाद, वी शुड ट्राई कि एज मच एज एनेस्थीसिया कैन बी अवॉइडेड। उसके अलावा हम ईसीजी में चेंजेस देखते हैं, इकोकार्डियोग्राफी होता है उसमें भी हम चेंजेस देखते हैं, और फिर हम कुछ कार्डियक बायोमार्कर होते हैं, ट्रोपोनिन, ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ये सारे होते हैं जो हम मॉनिटर कर सकते हैं हार्ट पे असर देखने के लिए। जो शुरू का समय है, जो प्री क्लिनिकल है, मतलब जब 6 साल के से 10 साल के आसपास का जो टाइम है, उसमें ईसीजी में चेंजेस होते हैं और थोड़े बहुत एमआरआई और इको में चेंजेस आ सकते हैं। अगर वो चेंजेस नजर आ जाए तो कुछ दवाइयां हैं जो हम शुरू कर सकते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के सलाह के अंडर, एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की तरह। फिर धीरे धीरे जो इको है या एमआरआई है, उस पे जो हार्ट का पंप करने का शक्ति है वो काफी कम हो जाता है। तो जब वो शुरू होता है तब हमें दवाइयों का मात्रा बढ़ाना पड़ता है, अगेन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट। अंत में वो इतना कम हो जाता है हार्ट में पंप करने की शक्ति, और साथ में हार्ट में फिर जैसे रिदम डिस्टर्बेंसेस, जिसको हम आम भाषा में हार्ट ब्लॉक या एरिथमिया बोलते हैं, वो चीज भी नजर आने लगता है। तो अगेन उसमें भी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। कुछ सर्जिकल डिवाइसेस भी है जो यूज किया जा सकते हैं, बट हमेशा याद रखेंगे कि दिस हैज टू हैपन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट। जहां तक टर्शियरी लेवल की बात है, टर्शियरी लेवल पे हमें पता है कि न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, सारे स्पेशलिस्ट अवेलेबल होते हैं। पेरिफेरल लेवल पे ये जरूरी है कि जिनको भी आप दिखा रहे हैं, अपने फिजिशियन को या पीडियाट्रिशियन को, उनके पास आप रेगुलर फॉलोअप में रहे, इस चीज के बारे में बात करें, ताकि वो भी आपको टाइम टू टाइम सही जगह पे रेफर कर पाए, क्योंकि इसमें एक मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज की जरूरत है जो हर पेरिफेरल सेंटर में, छोटे शहर में, गांव में हो सकता है अवेलेबल ना हो। लेकिन अगर अवेयरनेस होगी पीडियाट्रिशियन में और ट्रीटिंग टीम में, तो फिर हम उस चीज को जल्दी टर्शियरी लेवल पे रेफर करके टाइम टू टाइम इसका हम चेकिंग करा सकते हैं। Thank you, Dr. Bishru. So we will So the next question is, what is the role of pharmacotherapy in a child with DMD, and what are the medications that are to be taken in a child with DMD during the ambulatory and the non-ambulatory stages? थैंक यू डॉक्टर गौतम। सो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स को हमेशा ये सवाल रहता है कि दवाइयाँ क्या अवेलेबल है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो साइंस हमें बताती है वो ये है कि स्टेरॉइड्स आर द स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ फार्माकोथेरेपी। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये चीज सबको समझना चाहिए, खास करके पेरेंट्स को, कि जो स्टेरॉइड्स हैं वो इस बीमारी का क्योर नहीं है। जो भी बीमारी की बढ़ने की गति है, सिर्फ उस गति को थोड़ा सा वो कम करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि रोक देंगे बीमारी को, बस जो गति है बढ़ने की उसको थोड़ा कम करेंगे। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो जो लाइफ है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होता है, पेरेंट्स के लिए केयर करना इजी होता है अगर बच्चे की बीमारी बढ़ने की गति थोड़ी कम है। एंड दूसरा ये इम्पोर्टेंट है कि आप जब स्टेरॉइड्स देते हैं, क्योंकि अभी बाकी बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है जो हम टेस्ट कर रहे हैं, जो हम ड्रग्स वगैरह टेस्ट कर रहे हैं, तो वो तभी फायदेमंद होगा अगर बच्चा उस वक्त चल रहा है। और चलने के लिए वो यूजफुल है कि स्टेरॉइड बच्चे को टाइमली शुरू किया जाए। स्टेरॉइड शुरू करने का मेन टाइम होता है कि जब हम प्लेटो फेज बोलते हैं, कि बच्चा नया और कोई शारीरिक चीज सीख नहीं रहा है, मतलब बच्चा दौड़ता था, अब दौड़ने में गिरने लग गया है, या फिर इससे नया कुछ और नहीं सीख रहा है अपने शारीरिक क्षमता में, तो स्टेरॉइड शुरू किया जाता है, जिसमें बीमारी के प्लेटो फेज बोलते हैं। स्टेरॉइड के डोजेजेस होते हैं, आमतौर पे 2 स्टेरॉइड ऑप्शंस अवेलेबल है, प्रेडनिसोलोन और डेफ्लेज़ाकॉर्ट। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम स्टेरॉइड शुरू करते हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, दोनों के हैं, कुछ कॉमन है, किसी में कोई चीज ज्यादा है, किसी में कोई चीज कम है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि स्टेरॉइड्स एक्सपर्ट्स के सलाह से लिया जाए। आपका जो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है लेड बाय पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, उनके सलाह से ये स्टेरॉइड चले, और
रूटीन जो स्टेरॉइड में मॉनिटरिंग होती है, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, चाहे ब्लड शुगर की हो, आपकी हाइट की हो, ग्रोथ की हो, बाकी जितनी मॉनिटरिंग होती है वो सारी मॉनिटरिंग चलता रहे, तो इसलिए जरूरी है कि आप एक्सपर्ट के सलाह से ही स्टेरॉइड लें। तो एम्बुलेटरी में तो ये है। अब बहुतों को ये होता है कि बच्चे ने तो चलना छोड़ दिया, तो अब हम स्टेरॉइड क्यों दें? तो ये ध्यान रहे कि जो हमारे हैंड के फंक्शंस हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी की फंक्शन है, या फिर जो हार्ट के फंक्शन है, लंग्स के फंक्शन है, उनको भी हम, जो वर्सनिंग होती है इस बीमारी में, उस गति को कम करने के लिए स्टेरॉइड यूज कर सकते हैं, ताकि इनके फंक्शंस भी लंबे टाइम तक कुछ हद तक प्रिजर्व्ड रहे, या जो खराब होने की गति है वो थोड़ा कम हो या धीरे हो। और इसके अलावा अभी कुछ नए ड्रग्स आए हैं, जैसे एक्सॉन स्किपिंग बोलते हैं, जिसमें जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, एक खास तरीके का डिलीशन जिसको बोलते हैं, जिसमें कुछ एक्सॉन्स निकल जाते हैं और इसके चलते बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है, जेनेटिकली ये कमी रहती है बच्चे में। तो उसमें ये कुछ एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज हैं जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर एनकरेजिंग, बट हमारे पास अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि हम उनको रूटीनली अपने प्रैक्टिस में लेके आए। दूसरी चीज है एटेल्यूरिन, वो भी एक दूसरे तरीके की जेनेटिक जब दिक्कत होती है तब हम यूज करते हैं उसको डीएमडी में। बट अगेन आप याद रखें कि ये सारी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट्स हैं, ऐसा लगता है कि इन पे हमें और रिसर्च करना चाहिए, काम करना चाहिए, हो सकता है आगे जाके फायदा हो, बट अभी हमारे पास उतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि हम इनको रूटीनली प्रिस्क्राइब करें। अभी हमें और एविडेंस की जरूरत है। बाकी स्टेरॉइड तो मैंने जैसे बताया आपको देना ही है, साथ में कैल्शियम सप्लीमेंट जरूरी है, बाइफॉस्फोनेट्स हैं जो अगर बोन में कमी हो जाती है ताकत की तो वो दी जाती है, मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन, गुड न्यूट्रिशन, फिर वैक्सीनेशन, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इन चिल्ड्रन विद डीएमडी। तो हमेशा एक्सपर्ट के फॉलोअप में रहें और उनके सलाह से इन दवाइयों को प्रॉपरली लेते रहें। Thank you so much. Now we will go to the next panel. Abhi questions we will take in the end, and the polls also we'll take it in the end. क्योंकि अभी ये holistic care था, can be about all the patients with DMD and SMA, and right now we will be just going to the second panel, which is talking about drugs. What is, whether it's hope versus hype. So I will request Dr. Kakuli to introduce everyone, and I'm really grateful to Dr. I.C. Verma, who is our teacher, role model, and our godfather of genetics, rare diseases, and he's taught me so much of clinical medicine. In 1994, made the foundation of my general clinical practice from 94 onwards. Thank you so much, sir. Very honored to have you here. My pleasure. My pleasure. Thank you, sir. Need your blessings always. Welcome, sir. Yeah. I'm Dr. Kakule this side. Now we'll have a panel 4 where we will have Dr. Sandeep, Dr. Siddharth Saha, Dr. I.C. Verma, and Dr. Ann as a panelist. Dr. I.C. Verma is a senior consultant and head of the Department of Medical Genetics at Gangaram Hospital, New Delhi. He joined AIIMS in 1967 and headed the genetics unit and has taken it to a very good level. He has been a member of Advisory Committee of Genetic Disorders at WHO in Geneva. His clinical and research interests are in management of fetal medicine and reproductive genetics, dysmorphology, cytogenetics, and biochemical techniques. He has also worked significantly on health problems of tribal communities in India. Dr. Anne Agnes Matthew, she is a pediatric neurologist, and she is a fellow of RCPCH also. She has commenced her pediatric neurology training at Great Ormond Street Hospital, one of the prestigious hospitals. Her research interests are epilepsy research, epilepsy genetics, ketogenic diet, and epilepsy surgeries. She had established the Pediatric Neurology Department and Child Developmental Center at Rainbow Children's Hospital in Bangalore. Dr. Sandeep Patil is a consultant epileptologist and pediatric neurologist who has received his training abroad, and he is well known for the febrile infection related epileptic encephalopathy known as FIRES, which got acclaimed at national and international levels. Dr. Sandeep is now working at Royal Children Hospital. Dr. Siddharth Saha is a consultant pediatric neurologist and epileptologist at Royal Institute of Child Neurosciences, Ahmedabad.
He has also received the fellow from RCPCH UK. He is a senior pediatric neurologist with a wide and extensive experience. Now we welcome everyone for discussion at the panel questions. Thank you so much. Before I request Dr. Ann for the first question, I need Professor Verma to make the opening remarks. New drug options, myths and truths, because there have been so many drugs which have come up recently, and it is very important to understand कि हमारे बच्चों के लिए क्या है अवेलेबल, उसकी कितनी कितनी एक्चुअली रियलिटी में कितना सक्सेस है, कितना होप है, कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. प्रोफेसर वर्मा सर, ओपनिंग रिमार्क सर. Okay. Do you want me to talk only on the SMA and DMD or Sir, no, sir. Our focus for all these webinars are only SMA and DMD as the commonest of the rare diseases, sir. Okay. Well, these are very tough diseases to treat. I remember, as she was telling you, when we were working at the All Indian show, these patients the SMA patients used to be there on the bed and lie down and without moving their limbs. And we really, all that we could do when the first test came about was to diagnose them. And we waited a long time before any therapy would come. The therapies have come, of course, the antisense oligonucleotides to include that exon which gets deleted. So it is definitely useful, but it is useful the earlier you start. I think I missed the first part of the presentation, but they must have emphasized this. So the less symptoms there are, and you start the treatment, the better results are going to be. The remarkable thing or the miraculous thing is the gene therapy. If you give the gene therapy before the symptoms have appeared, although the patient has the mutation, this patient will develop normally. He will grow up, the child will grow up and run around and jump around like any normal child. So this is quite a miracle, I think. Of course, it's very expensive. I remember once the president of Genzyme, at that time there was Dr. Beaker, David Beaker. So I was talking to him and he asked me, he said, what price will you put on a drug which will save the patient and completely alter his life? It's like the gene therapy for SMA. So what price will you put on life? You're really giving them new life. So in a way, the cost, high cost, the company has put down is realistic, is because the cost, the money they spend to develop the drug, to do the trials is quite expensive. And so in India, I tell you, I am chairing one consortium on rare diseases at the ICMR. The ICMR is a nodal agency. And I'm surprised and I'm really happy, in fact, that the talent that is there in India to develop these new drugs is quite amazing. Somehow, the spark to develop the drugs is missing. See, in the US, the spark is there because of the money that you will earn eventually, the man who develops the drug. You give it to the company, you give it to some company, and they will give you a hefty royalty, and you may not have to work again. In India, we lack this. We lack somehow the personal satisfaction, the personal gratification that you will get in developing new drugs. So the exon skipping, personally I feel that I don't agree that there is no benefit. I think there is benefit. I think you have to start early. I think all this world people are using this, they can't be fools. There have to be some benefit. The company can fool a few people,
but you cannot fool such a large population. And so I think that exon skipping and this is useful. It is not too complicated to develop, and we must have more units in India to develop this. There are already a couple of companies in one in Calcutta and one in Bangalore who claim they have developed this, and they are offering this at a much lower price than the US price or the European price. They are almost offering at about, I think, 1/10 the price. But still expensive because the basic components have to come from USA. In fact, there is a website, if you haven't seen it, which tells you, you put the sequence which you want to, the exon you want to skip, the sequence of the exon, and it will tell you what all anti-sense oligonucleotide you must make. And then you just can even order it from a machine. You can order it some other company, outsources in the US. So personally, I feel the exon skipping thing is working. I find a lot of reluctance in India to use steroids, deflazacort or corticosteroid or prednisolone. And I don't know whether this is engendered by physicians, they're thinking of so many side effects, but certainly they are very, very useful in cases of DMD. And all patients should be put as early as possible. I think this definition of plateau is not a clear concept. It's very difficult to define. But people are saying that better to start early because it makes the muscle stronger, it gives you a longer ambulation and improves the heart, improves the respiratory muscles. And we hope, I think so, SMA, we have the gene therapy. Somehow we have to establish units in India to make gene therapy. See, the gene therapy is one benefit. You develop gene therapy for one disease. You develop a cassette. You develop a system where you can remove the harmful genes and put the gene of interest. And then it becomes simple. Then you have to just a vial and the injection has to be given intravenous or whatever it is. So then, and you develop treatment for one disease, you can use the same for other diseases. Obviously, for different diseases, you may have to go intrathecal for some diseases because they may not cross the blood-brain barrier. So I think these are the remarks I have to make. I think we have to galvanize our people, our scientists, our doctors, that the treatments are there and they are within reach. We have to develop it. We are just too busy in everything. Each one of us is involved in too many things. And I think that now a stage has come that we have sufficient experts that we could localize interest. We could have people in the neurologists who only say, put more emphasis on DMD and try to develop the drugs. I think that's where we are building. We just keep using what's developed abroad. One thing, of course, is as mentioned, the rewards. The rewards you get here really aren't commensurate with the effort that is required. Innovation. The innovation is missing in India. And because the reward for the innovation isn't as great as you find abroad. I think that's all I have to say, and I will be pleased to listen what the others have to say. Thank you very much, sir. Sir, last week the first two webinars जो थे, they were targeting की approach holistically approach क्या है to diagnose DMD SMA, and the second one was on the recent drugs. So all this was all covered as webinars, and then today has been a discussion. Morning में we had on the multidisciplinary management, and right now is on the newer drug. What is the myths and truths? So, Dr. Ann, thank you for sparing your time. Dr. Ann, we'll be asking you the question. Can you put the slide? Madam, while you're putting up the slide, can I make the point? Yeah, your voice is breaking, and your voice is breaking. Next. Am I audible? You're audible. Yeah, you're audible. You're visible. Yeah, all good right now. Yeah.
Okay, I just wanted to make a point just before we start. Just Sure. to add on to what Dr. Varma said. Thank you for the very kind introduction to all of us. But although I'm a fellow of FRCTCH and fellow in epilepsy genetics, I did 2 years of fellowship in neuromuscular and I'm solely concentrating in neuromuscular. All my research interest is now only neuromuscular. We just recently published a cardiomyopathy data set of 108 in DMD. That was recently, and we're just publishing our SME data. That was the only thing. And I think I truly believe in what Dr. Varma said, that there are enough of us experts that we should be concentrating only on one thing. And I'm beginning to do only more and more only neuromuscular work and not so much epilepsy work. And that's why we requested you to be here from the busy schedule. So without you, we could not have had this session. And my colleagues had taken out from the net, as all our net data is not completely updated. So this is all what they got, because I did not ask you guys for the CB slides and all. So why my colleagues in the department have taken out, all the scientists and all, they've taken out from the net. So and they didn't know you personally, and I did not get time to check. But yeah, you are here, and as a request to you, because you're focusing on neuromuscle diseases. And the first question. So the first question is, a 6-month-old flopping infant has been recently diagnosed with SMA. The child has no head control and the genetic report says 2 copies of SMN2 gene. What treatment options do we have at present to offer to this child? I think we all know what the treatment options are. What we did 2 years ago to now is different. Now, what we are currently doing, despite the fact that 25 of our patients have received gene therapy and 70 of our patients are on therapy, what we do, and every day we face this, is we tell them there are 2 options: treatment or palliative, curative as well as palliative. And we do encourage our families, especially this is a type 1 baby. Despite the treatment, there's not going to be magic. Even if the drug is free of charge, the family is going to have a type 2 child who is going to be very sick, who may have scoliosis, who needs bypass, who needs long-term cure, long-term care. So we tell the families, are you ready for it? And we tell them you can change your mind at any time. And some families opt for palliative and then they change their mind. Some families opt for curative and then change their mind. We give them both these options. And we have a very good palliative care team. And we try to help them step down their care. But once the care comes, we tell them, we will not offer you, even for our gene therapy patients, those who get gene therapy, we've not lost anybody. And that's because we are very aggressive. We tell them, gene therapy is there, Spinraza is there, Risdiplam is there. Shall we put a full stop of the disease with one of the disease-modifying agents, which is not a curative option, like Risdiplam and Spinraza, we don't have to give because we don't have the option. But ideally, in Western countries, what they do is, the moment diagnosis is made, they give them Spinraza. This is the standard of care, and then they give them gene therapy. Since we cannot afford to do it, what we do is, okay, shall we give Risdiplam? Because there's a compassionate access program where they can get it for 6 months and see if we can get you gene therapy. If not, we just apply for the lottery and leave it at a prayer and a wish and see if we can get it. If you can't get it, the child is deteriorating in front of your eyes and you're giving gene therapy to somebody when they're not as good. Everybody improves with gene therapy, but the longer they lose arterial horns, it's not very great. We regret treating them. Even though they improve, we regret treating them. I don't know if that's the complete answer. That is just यही बोल रहे हैं, डॉक्टर एन ये बोल रहे हैं कि अभी ये बात करना पड़ेगा कि स्पेशली जो SMA टाइप 1 बच्चे छोटे हैं, वेदर टू ट्रीट और नॉट टू ट्रीट, बिकॉज ये बच्चों का क्योंकि उतना आउटकम में ये नहीं है कि मैजिकल क्योर्स नहीं है, जो नया थेरेपीज हैं, तो हमें हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज दैट इज वाई जो इसका टाइटल है मिथ्स एंड ट्रूथ्स. तो मतलब पेरेंट्स हैं हमारे भी जो इतने सारे जीन थेरेपी के पेशेंट्स हैं, कई पेरेंट्स को they were expecting magical cures. वो magical cure नहीं हुआ, although motor development सबका improve हुआ है. So but they have, some of them are dissatisfied. तो इसलिए है कि इसके अंदर we have to take Dr. Ann, I'm speaking in Hindi because we are catering to professionals as well as parents. So that's why I'm translating what you said. Yeah, that's why. So that's why वो कह रहे हैं कि decide करना है कि treatment देना है कि नहीं, और जो छोटे बच्चे हैं उसमें palliative care के लिए देखना है, ताकि अगर हमें definitive नहीं देना, बच्चे को support देना है ताकि comfort में रहे. इस बारे में यही डॉक्टर एन बता रहे हैं. और उनके पास भी, जैसे उनके पास डॉक्टर सिद्धार्थ शाह, डॉक्टर पाटिल भी आएंगे, और हम लोगों ने भी जीन थेरेपी और स्पिनरजा और रिस्डिप्लाम पे काफ़ी एक्सपीरियंस है, तभी हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं आज. नेक्स्ट क्वेश्चन. Ma'am, the next question is, what precautions are required in a patient post gene therapy, and is there any requirement of any chronic medications post therapy?
And what are the side effects that are to be anticipated in such patients? So ये बहुत important question है. This is a very important question because as Shefali madam mentioned that there are no magical outcomes. So we have become more and more strict with every patient who comes for gene therapy. We tell them ये सब आपको करना है, मंजूर है तभी आएगा, वरना मत आइएगा. So we tell everybody, you have to agree for BiPAP, you have to agree for fundoplication, you have to try and source yourself a cough assist and all these things. वरना ये सब करने से कोई फायदा ही नहीं है. Because you are not going to make them normal, you are modifying the disease. So because you are modifying the disease, these people require specialist care, which means they require specialized centers such as, specialized neuromuscular centers, which have, a very good dietitian, a very good pediatric surgeon, very good pediatric pulmonologist, sleep medicine and people like that available along with the pediatric neurologists. ये सब इकट्ठा काम नहीं करेंगे, ब्रीदिंग का डॉक्टर, सांस लेने का डॉक्टर, न्यूट्रिशन लेने का डॉक्टर, ये सब इकट्ठा काम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नाकाम रहेंगे. बच्चा तो ठीक होगा, 2 साल में इंप्रूव होगा, the child will improve in 2 years, but by the time a complication will kill the child, and that's how you get bad results. That's how you get all these things. So this is something that we are particularly seeing. Complications, I think in the news we saw that 2 children died in Russia and Kazakhstan with liver failure. We've also had a child who almost died of liver failure. We went to liver biopsy. We did genetics to see if the child had a concomitant liver second pathology which contributed to liver disease and didn't find it. But I think we still don't know enough about gene therapy. And gene therapy can be potentially dangerous. They do have a lot of side effects. So our protocol to how we manage these gene therapy patients are changing because our experience is also changing. Can I add something? And hi, Dr. Sandeep Patil here. Yeah, thank you, Dr. Patil. Yeah. Just to add, this is our Indian experience. One of my child who has received gene therapy and who was on nasogastric tube feeding, and actually the parent themselves force feed the child, so they breastfed the child. Dr. Patil, थोड़ी आवाज कट रही थी. Can you repeat? Can you repeat? Can you repeat? आपकी voice break कर रही थी. हाँ, yeah. Okay. I'm just NG feed के आगे नहीं सुनाई दिया. NG feed. Yeah. So the child who has received gene therapy and who was on a nasogastric tube feeding, the parents force feed the child. So they gave the breastfeeding, and there is an aspiration, and the child succumbed to that aspiration. So basically, aftercare is very much important rather than gene therapy. Gene therapy is a one-time thing, but as Anne suggested, we need ongoing aftercare for these kids with specialists, with therapists, and everything involved with SMA care. Absolutely, Dr. Patil. तभी morning का जो present first था was holistic management, because everybody has to understand कि आगे we cannot बढ़ ही नहीं सकते हैं कुछ definitive cure जब तक supportive holistic care नहीं होगा. और ये भी जीन थेरेपी के पेशेंट्स के लिए जीन थेरेपी के पेशेंट्स के अंदर जो है कि इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है कि इनका OT-PT का प्लान जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, साथ में न्यूट्रिशन केयर सारा कुछ देखना है, एंड एवरीथिंग हैज टू बी केप्ट इन माइंड, एंड दैट्स व्हाई हमारे पैनल में बिसाइड्स हैविंग द गॉडफादर ऑफ द रेयर डिजीजेस वी हैव पीपल हु हैव एक्सपीरियंस, और इतना सारा पेशेंट्स को सारी ऑल द 3 काइंड्स ऑफ न्यू थेरेपीज फॉर SMA प्लस DMD के भी जो न्यू एडवांसेस हैं उसके लिए एवरीबडी हैज बीन वर्किंग, दैट्स व्हाई दे आर देयर. Can we ask the next Dr. Siddharth? Madam, can I make one point? Sure. Before we go on to the DMD thing, Madam, please. I agree with Dr. Sandeep on this, and I'm sure all of us struggle to convince families that they need to NG feed them. And Dr. Sandeep, I completely sympathize with you because I also meet this all the time. It becomes easier for us because we have large number of patients. What we do is we make them group counsel each other. एक patient दूसरे को कहते हैं कि अरे तुम NG नहीं कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे को निमोनिया हो जाएगा. जब डॉक्टर कह रहा है वो नहीं मानेगा, कोई और माता पिता कहेगा तो वो मानता है.
So that's one. Another thing is I really applaud Dr. Shefali Madam, your efforts to bring public-private collaboration. We are a fast-growing economy where lots of things are happening. We're not Africa. India is growing so much. In many ways, these newer therapies are becoming more accessible to us than in the West, than in UK and other countries. But we have a unique window of opportunity here where if government hospitals and public-private collaboration doesn't happen, the patients fall out. So it's really, really glad and applaud your effort and involving Dr. Sandeep and me and Dr. Siddharth in this. And towards that end, so when you're talking about the three new drugs, Zolgensma, Spinraza, and Risdiplam, I think in many ways it's good that all of us are using this. But in some ways, if there was any way you could do something about the fact that Risdiplam is something like a stopgap measure, there are a few patients whom we have diagnosed early. They managed to fundraise somehow, and we stopped the disease with Risdiplam. So we use Risdiplam as a sampling thing. But now what has happened is that for most of us who have large patient loads, those of us who don't work in government sector, there has been a penalizing thing from the government, a government order that was issued by Nirmala Sitharaman's office, which said from the 1st of July, जो भी free samples हमें मिलते हैं, हमें doctors को मिलते हैं, हम जो patients को देते हैं, वो हमारी income माना जाता है, and हर bottle पे हमें 1.28 lakhs भरना पड़ता है, patient के लिए जो हम मुफ्त में देते हैं. ये तो मुझे पता नहीं ये कैसे address होता है. ये Risdiplam पे होता है, और हम सब doctors पे लागू होता है. तो हमारे जो patients जो ongoing दे रहे हैं drug, हमें उस पे 1.28 lakhs हर patient हर bottle में देना पड़ता है. So I'm hoping that these problems can be sorted and we can work together. Thank you, Madam. Thank you. Thank you so much. Now, Dr. Siddharth. Yes. The question is to you, sir. FDA has approved Spinraza for SMA in 2016. There are many SMA beneficiaries across the globe getting nusinersen from tertiary care centers, including our institute. What results do we see in those patients who are getting Spinraza? Yeah. So first of all, thank you for inviting me, and I really congratulate Delhi AIIMS for taking this initiative. So to the question, I'll just focus on Spinraza or nusinersen. As we all know, this is a disease-modifying drug that works at the gene level. Basically, it does not work at the SMN1 protein level, but at SMN2 protein level. हम जानते हैं कि जो बच्चे SMA जिनको है उनको SMN1 का डिलीशन हुआ है और उसकी वजह से जो प्रोटीन है वो कम मात्रा में या बहुत प्रोड्यूस होता है and that is what leads to eventual weakness in the muscles. Now what does Spinraza do? तो ये दवाई जो है जो दूसरा उसके साथ पैरेलल SMN2 जीन है उसके ऊपर काम करके जो वीक प्रोटीन वहां से रिलीज होता है उसको ज्यादा वॉल्यूम में और ज्यादा बेटर क्वालिटी का रिलीज हो एंड वीक हो उस पे काम करता है. So basically it helps to balance out the deficiency due to SMN1 deletion. So this is the mechanism. So that is why it is not considered a cure, because the cure, which is Zolgensma SMA, works directly on replacing SMN1 gene deletion. ये दवाई जो है we have to understand that it is via lumbar puncture. मतलब बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है वहां से जैसे लंबर पंक्चर करते हैं तो नीडल से वहां से दवाई डिलीवर करनी पड़ती है. Also, the big difference from Zolgensma SMA is that this is not a one-time therapy. This has to be given regularly, every 3 to 4 months. As has been asked in the question, काफी सारे पेशेंट हमारे यूनिट में, दिल्ली में, बैंगलोर में, हर जगह ये दवाई ले चुके हैं. लाल पेन नहीं मिला कहीं. And the question is, are they benefiting from it? Yes. So all patients have been benefiting from receiving the drug Spinraza in terms of disease modification. So if it has been started early enough and in an SMA type 1 patient, then the survival has been prolonged, and this is ventilator-free survival. काफी सारे SMN2 पेशेंट्स हैं जिनको दिया गया है SMA type 2 पेशेंट्स और उसमें we have seen a very good increase in motor milestones, so they are able to stand, they are able to take steps with orthosis help as well.
What we have also seen is that SMA is a multi-system disease. So जो अभी तक discussion हो रहा था कि respiratory infections and GI. So what we have seen, there is a huge benefit in GI issues. They are reduced. So the swallowing is better, the weight gain is better, and that leads to the overall improvement in the patient as well. Most of our patients have stopped being admitted due to respiratory infections after receiving Spinraza. So there are some really good results from receiving Spinraza. Of course, what we have to keep emphasizing is कि ये कोई magic cure नहीं है. इसके साथ में जो patients ने अच्छा ख्याल रखा है पहले भी ड्रग लेने के पहले और ड्रग लेने के बाद में, they have received the best benefits as compared to those patients who had, say for example, कम वजन था, respiratory infections बहुत रहते थे और फिजियोथेरेपी नहीं करवाई थी, तो वो पेशेंट्स को इतना अच्छा बेनिफिट नहीं देखने को मिला. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर सिद्धार्थ. इम्पॉर्टेंट है ये समझना, पर ये समझना है कि जो न्यूसिनर्सिन है उसको लाइफ लॉन्ग देना पड़ेगा. शुरू में जो लोडिंग डोज था, जो पहला है 3 लोडिंग डोज 15-15 दिन के एंड में और थर्ड और फोर्थ के बीच में 30 डेज का है, उसके बाद एवरी 4 मंथली लाइफ लॉन्ग. तो ये नहीं है कि अभी, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ कि ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस प्रोग्राम के अंदर कोई पेशेंट को मिला है तो फिर वो कई पेशेंट हैं जो वापस आना नहीं चाह रहे, वो मैजिकल समझ रहे थे, उसके बाद जब बुला रहे हैं कि आपको आओ तो फिर मतलब रूटीनली आना है. तो इसलिए इम्पोर्टेंट समझना है कि चीज़ों में बेनिफिट है और इम्प्रूवमेंट रहेगा, पर कोई ये रामबाण या मैजिक नहीं है, और सारा बाकी सपोर्टिव केयर साथ ही चलेगा तभी मैक्सिमम बेनिफिट रहेगा. और जैसे आईसी वर्मा सर ने बोला, एसएमए एज वेल एज डीएमडी में हमारे को जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करना है, और जो डीएमडी का हम एंड में बात करेंगे, जो सपोर्टिव केयर के बारे में जो हमने लास्ट टाइम भी बहुत मेंशन किया था कि स्टेरॉइड तो देना ही देना है, उसके ऊपर है जो बाकी चीज़ें हैं करने के लिए. नाउ डॉक्टर पाटिल, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर गौतम पूछें. Sir, what is the status of risdiplam in India, and can you brief on the advantages of this drug over the other available therapies for SMA? Okay, so the risdiplam is actually available in the market in India, so it's we can actually prescribe the drug, and though I have only few patients on the risdiplam, there is the scheme which goes on with the drugs, and actually the advantage of that drug is you can give it orally. So as we know that gene therapy is IV, and the other therapy is intrathecal. So the Spinraza is intrathecal. So the risdiplam we can give orally once a day kind of preparation, and but it has to continue over the period of time. So it is available as a prescribed drug in India, and we can prescribe it. The other two drugs are like we are giving through the compassionate program, or maybe gene therapy you are buying it from the USA. So the advantage of risdiplam is availability in India and oral route. बट अगेन ये देखना है कि ये जो दवाई है ये लाइफ लॉन्ग देनी है, और इसके लिए भी प्रिकॉशंस होती हैं. एक को ब्राउन कलर एम्बर कलर की बॉटल होती है, उसके अंदर जो उसमें पानी मिलाना होता है वो डॉक्टर ही मिलाता है. फिर टेम्परेचर कंट्रोल में रखना है कि ज़्यादा गर्म एरिया में नहीं होना चाहिए, और उसकी मात्रा बना के करना है. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सारी की सारी जो तीनों एसएमए की दवाइयाँ हैं उनकी एसओपी है, स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, और पेरेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी पेरेंटल काउंसलिंग उसके लिए है ताकि स्पेसिफिक चीज़ें होनी है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये लोग कैसे सिरिंज को रखेंगे, कैसे नाप के करेंगे, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट डॉक्टर सिद्धार्थ विल बी आस्किंग यू, एक बहुत प्रॉब्लम आती है विच वी फेस कॉमनली. नेक्स्ट प्लीज. नहीं, नेक्स्ट. Yeah. So we have an anxious patient of SMA1 child who has been successfully administered gene therapy from a private hospital a month ago. A month later, he came to our institute to express his concern that the child has not improved as he had expected. He mentioned that he has sold his house assets and the business shares for the gene therapy, along with the aid of crowdfunding. So how do we counsel this parent?
Yes, so I mean, as ma'am said, it's becoming a common scenario, and it's a very difficult scenario for all of us. We do agree that the goal of Cure SMA, of parent groups and medical specialists is to save every single child of SMA, since now there is a treatment available. But in a country like India, where there is a large number of patients. I think one estimate is that you could have up to 3,000 patients of SMA type 1 born every single day in India, if antenatal counseling is not done. So we will be facing with a large number of patients who are now looking for treatment options. And the price tag, so I assume this patient has taken Zolzen SMA. He has spent about 16 to 20 crore rupees for this single injection treatment. Now, a few major points. एक तो SMA की जो gene therapy है, it works much better as if it is given much earlier. So now we have to go to a phase where जहाँ पे even pre-symptomatic phase, अभी symptoms नहीं आए हैं और बच्चे में हम identify कर पाए. So talk about carrier status counseling in new parents. So it is so common. Carrier rates are 1 in 45 to 1 in 60. So out of 60 of us, one person might be carrying the gene deletion that is responsible ultimately for having a child with SMA. So जितना जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए और जीन थेरेपी दिया जाए या कोई भी ट्रीटमेंट दिया जाए उतना इफेक्टिव रहेगा. Now ये पेशेंट में we'll have to know कौन सी उम्र पे उसने ट्रीटमेंट लिया. So if it was before 6 months, yes, you could appreciate that in 4 to 6 weeks you will start seeing improvement in motor milestones. You are then guaranteed for a ventilator-free survival without mortality, and you could also look at achieving milestones such as sitting independently and even standing or walking independently. After 6 months of age, the later it happens. मैंने अभी recently एक बच्चा देखा था जो 20 महीने की उम्र पे, जो कट ऑफ है 24 months की, उसके just पहले उसने जीन थेरेपी लिया है. And that patient is at the moment on home ventilation via tracheostomy, and really is almost behaving like a SMA type 1 patient, still without treatment. The only difference is that the patient has survived beyond the cutoff of 12 to 18 months, where most patients unfortunately die. So एक तो एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखना है कि ये दवाई क्या कर सकती है, कौन टाइम पे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एंड एज डिस्कस्ड बाय ऑल द ऑनरेबल पैनल, उसके बाद की क्या केयर ली जाती है. सो would we ask someone to sell his house, assets, business shares, everything for the single shot of gene therapy? I would carefully counsel this parent even before going for this treatment, because there is a lot more after that, as and very rightly pointed out कि उसके बाद के care का क्या. You are going to live with a patient who still has the disease. The patient survives and will have a good possibility of achieving further motor milestones. But there's a lot more care to be taken afterwards as well. So please do not do this. हाथ जोड़ के विनंती है सभी पेरेंट्स को वहाँ पे कि आपका बच्चा जितना आपके लिए वैल्यूएबल है, जितना प्रेशियस है, हम सब के लिए है. But we have to align our expectations and what will happen afterwards. So don't, without any advice, go for crowdfunding and things like that. Take advice from a big center, those who are dealing with SMA clinics. Now we have established with the help of everybody multidisciplinary clinics. Take proper advice, counseling, have realistic expectations, and then if possible, go for gene therapy. Actually, जो भी queries हैं and questions, you can post in the chat group, either on the Zoom platform and even on the YouTube, because it's being live streamed on YouTube. And poll जो है वो end में करेंगे. And we have to, all of us have to make patient information material which we have in Hindi and English, which we are giving to our patients on SMA and DMD, ताकि उनको जो भी सारा supportive care है वो बनाए. और अभी current medications के साथ जो add हो रहा है, तो we are developing as a part of, besides that, वो हमारी website www.pediatrics.org में है, soft copies anybody can download from the parents corner,
which are there, and but we are making more currently for the what we expect with the newer therapies coming up and supportive care. So questions आप please chat box में डालिए, और जो पोल हमने लास्ट टाइम बीच में किया था वो एंड में करेंगे. एंड आई जस्ट वांट टू टेल कि अभी जो सारे और मुद्दे हैं ना, जो भी बात हो रही थी बेसिकली अबाउट ब्रेकिंग द न्यूज़, ट्रांजिशनल केयर, पैलेटिव केयर, एथिकल इश्यूज है, हमें पता है दवाई है पर मिल नहीं रही है हम लोगों को, डिस्टिग्मेटाइजेशन, ह्यूमैनिस्टिक एस्पेक्ट, रिसर्च का क्या रोल है, गवर्नमेंट की रेयर डिजीज पॉलिसी क्या है, कॉस्ट में इंश्योरेंस वगैरह का कैसे हो सकता है, पेरेंट सपोर्ट ग्रुप का क्या है, फार्मा इंडस्ट्री जो है, जो सारे ये जो एमएनसीज हैं जो बना रहे हैं उन सबको हम रोपिन करके ला रहे हैं, सारे जो प्रिंट मीडिया और का क्या है, एनजीओज का इंडिया में और बाहर का कैसे क्या सिनेरियो है, क्राउड फंडिंग का क्या है, सेल्फ और पेरेंट एडवोकेट्स, और जो ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस प्रोग्राम है, और जो अभी रिसेंटली कोल इंडिया ने हमारे एक पेशेंट को जोलजेस्मा का स्पॉन्सर किया था, तो क्या एम्प्लॉयज बेनिफिशियरी स्कीम है, एंड पेरेंटल काउंसलिंग, कोपिंग स्ट्रैटेजीज, ये सारे के ऊपर अगले टिल 3rd जो हमारे 20 हैं जो वेबिनार्स उसमें कवर करा जाएगा. सो दैट इज हाउ वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इट वाज वेरी पेनफुल, क्योंकि हमारे पास एक पेशेंट आया, मैं कोई जगह का बताऊंगी नहीं, स्टेट किसी दूर से स्टेट से आया, वो मुझे बताया गया कि वो पेरेंट्स एक टेम्पल के बाहर बैठ के बहुत महीनों से दे आर कलेक्टिंग मनी. आप समझ रहे हैं मतलब, सो इट इज सो पेरेंट्स के लिए कितने डायलेमा है ना. तो इसलिए हम लोगों को सारा वो एस्पेक्ट देखना है, इसीलिए आईसी वर्मा सर हैज लेड दैट रेयर डिजीज पॉलिसी, विच वो नेक्स्ट वीक में हमारा सेशन होगा. सर अभी भी थोड़ा कमेंट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर पाटिल. Sir, is there any role of combining the multiple disease modifying agents in the same patient with SMA, and has it been tried till now? Yeah, so this is a very good question actually, and obviously, first limitation what we got is the treatments. All the modalities of treatment for SMAs are costly in nature. So even we are talking about सिंगल डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स, एंड अभी जो बात हो रही है कि लोग घर बेचने का सोच रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स. सो प्रोबेबली दिस इज very difficult combining two disease modifying agents together, but of late two of my patients are in a combination of therapy, and scientifically if you look at it, there is a role of combining the multiple disease modifying agents, because they seems to have like additive effect. So one of my patients who has got Spinraza, we given gene therapy, so there is a good improvement with that. And the other patient who has got gene therapy, Zolgensma, and now is on Resdipam. So definitely there is a role of combination of multiple disease modifying agents, but as we are discussing again and again, the holistic approach and the cost effectiveness, and there are desirable candidates which are all over the India. So not at the expense of other things. I would say not at the expense of other things. But if you say that academically, if there is a combination which can be used, then certainly we can use the combination. Yeah. थैंक यू. बट बेसिकली एक और चीज़ है कि जो लास्ट टाइम भी लास्ट वीक में जब हम लोग रिव्यू बता रहे थे, तो ये बताया था कि बिसाइड्स दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बिटवीन दिस Spinraza, Zolgensma और Risdiplam, they are also think कि हिस्टोन डीएसिटिलेज स्टेबिलाइजर्स वगैरह जो डिफरेंट मैकेनिज्म है उनको भी ऐड करने का चल रहा है, और कुछ नया नया ड्रग्स भी पाइपलाइन में है. इसके बाद ब्रीफली आप डीएमडी का के बारे में मेंशन करेंगे. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. इज देयर इज अ क्योर फॉर डीएमडी, एंड व्हाट आर द पाइपलाइन डेवलपमेंट्स फॉर डीएमडी मैनेजमेंट, एंड हाउ अर्ली कैन वी एक्सपेक्ट फॉर अ ड्रग इन डीएमडी इन इंडिया. जैसे कि सर ने बताया शुरू में ओपनिंग स्टेटमेंट में, बेसिकली एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है पेरेंट्स के अंदर भी. एक तो जो स्टेरॉइड्स से लोग भागते हैं, स्टेरॉइड्स देते नहीं है, और स्टेरॉइड्स का जैसे हमने लास्ट वीक भी बताया था
कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिससे जो ऑनगोइंग डैमेज है उससे कम होता है। एंड जो किसी ने अगर मिस किया है तो वो सारा वो यूट्यूब में अवेलेबल है, सारी की सारी सीरीज यूट्यूब में अवेलेबल होगी, जो फिर हमारी वेबसाइट में, एम्स की वेबसाइट में और ग्लोबल जीन्स की वेबसाइट में भी होगी। तो उसमें था कि हमें स्टीरॉइड्स तो देना ही देना है। एंड हमने लास्ट वीक मेंशन भी किया था, जैसे सर बता रहे हैं कि जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं, ये देखा गया है कि जो बच्चों को लेस देन 5 ईयर्स में स्टार्ट किया था स्टीरॉइड्स, उनका रेट ऑफ प्रोग्रेशन बाद में थोड़ा कम हुआ है। तो एंड बाकी जो सपोर्टिव केयर के लिए जो मॉर्निंग में भी डिस्कस कर रहे थे, उसके बिसाइड्स जो न्यू ड्रग्स जो डेवलपमेंट के अंदर हैं, उसके अंदर जो डेवलपमेंट में ड्रग्स हैं बेसिकली उसमें ये है जो मेनली अभी एटलुरेन एक चल रहा है, जिसका जो यूरोप में अप्रूव्ड है लेकिन एफडीए का अप्रूवल नहीं हुआ, उसका भी ट्रायल खत्म हो रहा है इंडिया में, बेसिकली फाइनल स्टेजेस में है। जो काफ़ी साइट्स थी, एम्स भी साइट थी, उसमें पेशेंट्स का वो डेटा कलेक्शन खत्म हो गया है, बस ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस में उनको दवाई दी जा रही है, तो उसका भी एनालिसिस होगा तो एफडीए से अप्रूव हो जाएगा। वो है जो वाला जो एक्चुअली क्या है कि डीएमडी की जो जीन है वो सबसे बहुत बड़ी जीन है, उसमें 79 एक्सॉन्स होते हैं, उसमें कहीं पे भी नुक्स होने से डिस्ट्रोफिन प्रोडक्शन नहीं होता है प्रॉपरली। तो वो डिफरेंट प्रकार 7000 एंड अबव उसकी म्यूटेशंस बताई गई है। तो जब वो अगर जो स्टॉप कोडॉन वाली है अगर है तो उसके अंदर वो एटलुरेन वर्क करता है, लेकिन कुछ ग्रुप्स ऑफ म्यूटेशंस हैं जिसके अंदर डिलीशन जो हो रही है, अगर वो एक्सॉन 45, 51 और 53 यानी कि वही वाले उसके आसपास के पेयर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं हमारे पास लिटरेचर में कि ये पेयर्स में है, अगर वहां पे वो गैप है एरिया में और वहां पे एक एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड उसके ऊपर जाके वो चिपकता है, एंड ताकि वो है कि आगे प्रोटीन डेवलपमेंट हो जाता है। तो वो वाले जो ये तीनों हैं उसकी दवाइयों के ऊपर रिसर्च चल रहा है, अभी एफडीए से अप्रूव्ड है 51 और 53, 51 पे मैक्सिमम डेटा है और लिटरेचर और फॉलोअप है जिसके अंदर उसमें बेनिफिट पाया गया है बच्चों में, जिसमें जो बच्चे 6 मिनट में 300 मीटर कम से कम चल पा रहे हैं उसमें ज़्यादा बेनिफिट पाया था। उसके अंदर की मोटर फंक्शन के मतलब इम्प्रूवमेंट में जो गिरावट है उसको स्लो किया जा रहा है, कम हो जा रहा है। और 53 पे और कम डेटा है, और 45 पे तो सेफ्टी वगैरह का ही डेटा है। 53 में भी जो स्टडीज हैं ज़्यादा बता रहा है कि वो डिस्ट्रोफिन प्रोडक्शन वगैरह है। अभी क्या है, वो इंटरनेशनली अवेलेबल ड्रग्स हैं जो जो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं हमारे लिए। साथ में इंडिया में रिसर्च के लिए, जैसे वर्मा सर ने बताया है, डार्ट ने भी कुछ ये एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बनाए हैं जिसका भी ट्रायल बोर्ड में यूज होने जा रहा है, जिसमें एम्स एक साइट है लेकिन अभी वो चालू नहीं हुआ। सरेप्टा के भी 2 ट्रायल्स आए हैं अभी, जो 45, 51, 53 वो भी अभी चालू होने वाले हैं। पर जो अगर हम उनको कॉस्ट के हिसाब से डालें, एक 30 केजी के बच्चे के लिए एटलुरेन का रफली कॉस्ट जो पड़ता है पर ईयर 8-9 करोड़ के करीब पड़ता है, और जो बाकी वालों का उसका है तो 5 से 6 करोड़ पड़ता है पर ईयर। सो द कॉस्ट आर वेरी मच बिग। वही तो इसलिए अगले हफ्ते भी डिस्कशन होगा रिसर्च पैनल में कि how exactly can we produce here, how can we get with research have our things available and developed here. Verma sir, would you like to add something on this DMD and then also on the SMA as a concluding thing before we open for the questions के लिए? ओके, मेरा एक ही सजेशन है। हाँ जी सर। कि जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हमें एक कैंपेन करनी चाहिए अर्ली डायग्नोसिस, एसएमए के लिए स्पेशली। जितना अर्ली डायग्नोस होगा, जितना अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उतना ही बेटर रिजल्ट आएंगे। हमने जब ये रिस्डी प्लान इंट्रोड्यूस हुआ तो कई बच्चे थे जिनकी उम्र 15 साल थी, 16 साल थी, सो उनमें जो इम्प्रूवमेंट हुई मामूली सी हुई, तो इतना फायदा नहीं हुआ उनमें, क्योंकि जो ऑलरेडी मसल डैमेज हो गया, वो रीजन जो न्यूरॉन डैमेज हो गए उनको रीजेनरेट नहीं कर सकते। सो इसलिए हमें अब बाहर के मुल्कों ने तो स्टार्ट कर दिया कि अभी न्यूबॉर्न्स की नहीं करो, जो डायग्नोज हुए उसको सिम्टम भी नहीं आए लेकिन डीएनए में टेस्ट में आ गया, उनको ट्रीटमेंट दो, उनका रिजल्ट सबसे अच्छा होगा। इनफैक्ट दैट इज लिटरली नथिंग शॉर्ट ऑफ ए मिरेकल, जिसको सिम्टम नहीं आए। एंड अब हमारी कंट्री में न्यूबॉर्न्स की नहीं तो अभी एसएमए दूर है, क्योंकि अभी तो थायराइड और ये भी स्टार्ट नहीं हुआ, किसी किसी स्टेट में हुआ है,
लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट को सबको ये कुछ निकालने चाहिए गाइडलाइन कि भाई ये सिम्टम है तो इमीडिएटली सस्पेक्ट करो कि भाई SMA का टेस्ट करवाओ और अगर है तो जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। तो ये आई थिंक मेरे यही फाइनल सलाह है। DMD का भी यही है कि इट इज बहुत टफ डिजीज है। आई थिंक आप बच्चे को देखते रहते हो, बैठा रहता है कि क्या करे। मेंटली बच्चे आमतौर पे अच्छे होते हैं और लेकिन उम्मीद है कि कुछ ना कुछ, अभी जीन थेरेपी अप्रूव नहीं हुई, ट्राई पहले अप्रूव होने वाली थी पर मेरा ख्याल है कोई रिजल्ट इतने अच्छे आए। टू गेट द जीन इनटू ऑल द मसल्स, स्केलेटल मसल, दैट इज द प्रॉब्लम। इट्स नॉट दैट इजी टू अचीव। सो आई थिंक लेकिन उम्मीद तो है, उम्मीद पे ही हम लोग जीते हैं, उम्मीद पे ही मरीज जीता है। तो आई थिंक यही मेरे सलाह है कि अभी अवेयरनेस की कैंपेन करनी चाहिए। Thank you so much, sir. Final message, take home message from Dr. and Dr. Patil, Dr. Siddharth. My message would be only that we need to collaborate. So whatever helps us collaborate without risking our reputations or integrity. So things like this rule that came in from the government that private doctors, when we are giving free samples, that we be penalized. So there are patients who are existing on risdiplam who are going to lose that access because I have to pay 1.2 lakhs per bottle. So which means every patient, if the patient requires 2 bottles, I have to pay 2.4 lakhs. I don't have that kind of money. So that is penalizing non-government doctors. Madam, if you can do, you are the only person who can do something. If something can't be done about it, then it will just become a public interest litigation or a fiasco. Dr. Ann, I'll talk to you separately. You tell me about the details so that because we'll be having a series of panels with the government and everything, so we can take it up, okay? So we can talk to me separately and we can take it up. And yes, what you have written. Yeah. To all of us except you. No, after my retirement, it will be applicable to me also. Sandeep, Siddharth and me are the ones who are going to be penalized. No, Dr. Ann. Be careful. Dr. Ann, it will be applicable to me also, although, after I retire. No, that's not the point. Idea is we all, I feel, मेरे को है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होना चाहिए। अभी देखो IC वर्मा सर ने पूरे यहाँ पे एम्स में पहले बनाया पूरा जेनेटिक्स, उसके बाद जाने गंगाराम में जेनेटिक्स बनाया, तो उन्होंने तो दोनों जगह डेवलप किया। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनली कर रहे हैं सब, तो उसमें तो है नहीं ना। तो मतलब वी हैव टू, तो एंड आई अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आसानी से पब्लिक में हो जाती है, कुछ चीजें आसानी से प्राइवेट में हो जाती है। हमारे को दोनों की चीजों के प्लस एंड माइनस सीखना है। Exactly. We have to learn and support. You made a very valid point that there is an SOP for making risdiplam. And the thing is, you have made it. Yeah. But हमारे यहाँ जो होता है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट में जो मेरा पेशेंट्स नहीं है, उनको दिया जाता है, जाओ तुम खुद बनाओ। नहीं मेरे पास आता है और मैं खुद बनाती हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मैं बनाती हूँ। नहीं, and let's not get into that thing. A point is what we can do is the SOPs what we made. Because for Spinraza was shared with everybody. So what we have made for Zolgensma, Risdiplam and all, वो हम ये जो training, ये resource material बना रहे हैं ना, we can add it. Unity ही हमारा strength है. बनाया है ना, उसको we can put it along with the resource material and we can have your inputs also. Everybody can give inputs and then we will have it for the resource material. All these sessions are being recorded and they will be on YouTube and they will also go on the Global Genes website, on our AIIMS website, and it will be on our www.pedneuroaims.org website. Idea is we have to collectively work for the welfare of the patient. That is the end result. जहाँ पे भी sector में that is not, and we have to ensure कि कैसे we can stop getting the जो patients का है, how those things can be reduced the cost. How without patent, सर जैसे वो ऑक्सफोर्ड की मेडिसिन यहाँ पे कोविशील्ड बनी थी, वो मुझे मालूम नहीं, तो whether something like that can be done for all these things, वर्मा सर ही गाइड करेंगे. So that's why when sir, I will need your support to block your next couple of days 10 to 12 to 12:30 for because many of these issues have to be flagged and you are the basically starting for that. And I think this is very important. And आपने जो बोला वो combination drugs, yes, they are showing कि different mechanism of action वाली drugs को करेंगे. जो एक और चीज मैं mention करना चाहती हूँ जो last time किया था, Zolgensma में जो है, that is
गेटिंग यू एन SMN जीन डाल रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट एंटरिंग इनटू द DNA, तो इट इज प्रोड्यूसिंग इट, वी डू नॉट नो कितने साल तक रहेगा। अभी तक का डेटा इज फॉर 5 years। राइट नाउ देयर इज अ स्टडी गोइंग ऑन फ्रॉम 2020 टू 2035। अभी है कि एक बार IVC हम सब लोग ने जोलजिस्मा दिया है, सो जिसमें एंड AAV9 जो वेक्टर है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जिसमें भी होती है, कोई पेशेंट्स हमारे हैं जिनको कभी मिला नहीं है पर एंटीबॉडीज आई है हमारी जो रिजेक्ट हो गए थे, तो अगर उसमें एंटीबॉडी है तो उसको दे नहीं सकते। तो अगर वो टेक नहीं रहता है 5 years के बाद, then what exactly are we going to do, whether we will, how, whether we'll have to repeat the Zolgensma, and then how do we repeat it when you have anti-AV9 titers, whether you'll have to use something, you know, from the decondition or whatever. So there's a lot of debate going on, and जो अभी सर ने मेंशन किया था, वो अभी रेनबो फिश ट्रायल का रिजल्ट्स आया है फ्रॉम रिजडीप्लाम, जिसमें लेस देन फिक्स तभी वीक्स के बच्चे जो हैं उनको जब रिजडीप्लाम दिया 1 year में उसके मोटर माइलस्टोन्स WHO के जो माइलस्टोन्स हैं जो टिपिकली डेवलपिंग बच्चों के होते हैं 1 year पे, उसके सिमिलर थे। So that is why sir is saying ki बहुत important, and we all understand early. So early picking and diagnosis. And sir, one thing more I want to flag, which we flagged last week but not today. If a family has 2 patients with SMA or DMD, it is a failure of the entire fraternity. एंड क्योंकि जब हमें पता है उसकी जेनेटिक काउंसलिंग और प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए करना है, एक फैमिली बच्चे के लिए क्या फैमिली में हो रहा है, अगर 2 बच्चे हो जाएं तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी important, sir. And before Dr. Siddharth, आप कुछ बोलना चाहेंगे, and Dr. Patil, Dr. Siddharth, final message before we put Yes, the poll and questions. Yes, so just from coordination point of view, all 4 of us, we are going to be participating in the exon skipping trial. So I think we should all again have a similar platform to plan it properly so that the best candidates and the most needy candidates will benefit from that trial, and we will be able to produce results for that. So Absolutely. that's just a request. Thank you. Absolutely, Dr. Siddharth. Dr. Patil. Yeah, I completely agree with what Dr. I.C. Verma said, because we have to start with early diagnosis. So once the early diagnosis is done, the treatment will be more effective. Even gene therapy would be more effective. And I also agree with Shefali madam that it will be criminal if one family has 2 kids with SMA or 2 kids with DMD. So again, that awareness has to be there. Now, many of our energies now, concentrating on a treatment or getting that, big budget gene therapies and all these. And I think we should always try to collaborate and focus into more of awareness campaign and along with these gene therapies as well. I think we'll before we see the questions, and we'll just have the polls also put, so that while the polls are being answered, questions will be answered. But one thing I wanted to call, I called my nutritionist who's been following our SMA and DMD patients. ये बताना चाह रही हूँ कि डाइटिशियन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, न्यूट्रिशन को देखना है, बोथ DMD बोथ SMA में, बोथ, ताकि DMD में फीडिंग नहीं हो रही है, वो अंडर नरिश नहीं होना चाहिए, और DMD वाले ओवरवेट नहीं होना चाहिए। बोथ वेज डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग के लिए। सो दैट्स हाउ यू वांट टू गिव 1 or 2 मैसेजेस। Yes, ma'am. Good afternoon, all of you. इसमें नॉर्मली हम जो खाना खाते हैं हमारे डाइट में 60% कार्बोहाइड्रेट, 30% फैट और 10% प्रोटीन होता है। बट SMA और DMD के लिए हमने जो प्रोटोकॉल बनाया है, इसमें हम 55% कार्बोहाइड्रेट, 25% फैट एंड 20% प्रोटीन दे रहे हैं। इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला है, बिकॉज़ प्रोटीन में हम बेसिकली सोया प्रोटीन ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें दाल वगैरह ऐड करेंगे तो अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। खाने की बहुत दिक्कत आती है ऐसे बच्चों को, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से वो खाना नहीं खा पाते हैं। और यही सेम एज़ इसमें DMD में भी यही हम फॉलो कर रहे हैं, सेम प्रोटोकॉल जो हम SMA में कर रहे हैं। तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका वेट गेन नहीं हो रहा है, बेसिकली SMA में वेट गेन नहीं होने की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हम कुछ बच्चों को, जो बच्चे नहीं खा पाते हैं, उनको हम NG डालने की कोशिश करते हैं कि
एनजी पेरेंट्स तैयार नहीं होते हैं डालने के लिए। और किसी में ज्यादा लंबा हो तो वी आर गोइंग फॉर जी ट्यूब एंड वो पेरेंट्स का जब एनजी ट्यूब नहीं हो रहा तो वे गेस्ट्रोस्टमी के लिए करते हैं। अगर जिसको प्रोलॉन्ग चाहिए, जिनको प्रॉब्लम होती है, लंबी प्रॉब्लम हो रही है, जिसको स्वॉलिंग वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है, जिसको ज्यादा स्पेशली टाइप 1 वाले में, तो उसके लिए भी हमें है कि इम्फोसाइज करना है, क्योंकि एनजी ट्यूब भी रात को निकल गई, कहाँ पे भागेंगे। तो अगर लंबा हमें लग रहा है तो गेस्ट्रोस्टमी ट्यूब के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो इंडोस्कोपिकली हो जाता है। एंड इसमें भी एनजी पे भी हम WHO के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग फैट जो है अप टू 47% जाते हैं, बट एनजी में हम क्या करते हैं, फैट है 35 से ज़्यादा नहीं जाते हैं, क्योंकि फैट परसेंटेज बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट 55 उसमें भी रखते हैं, बट प्रोटीन जो है हम 15 टू 16% एनजी में जाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रोटीन देने का हमारे पास स्कोप तो बेसिकली वील हैव टू प्लान आउट एंड फोकस ऑन द डाइट पार्ट एंड इंडिविजुअलाइज होगा। तो एसएमए में बेसिकली वेट नहीं हो रहा है उसके लिए प्रॉब्लम है, और डीएमडी में देखना है कि वेट गेन नहीं हो रहा है उसकी प्रॉब्लम है। तो वी कैन प्लीज आंसर द पोल. This is for the first and second, both of them, and we can just thank you all the panelists and the guests who are attending this webinar session. We'll have 2 sets of poll based on the 2 sessions we had. We'll start with the first poll, which will have 5 questions and it will end in 5 minutes. And for the second set, we'll again launch the poll after this. ऊपर चलो। Kindly attend to the poll questions. They are very layman questions, but definitely we would also want all the panelists to also go through these questions. We'll have the question and answer session at the end of the polls. Panelists, kindly be seated with us for some more time so that we can address few of the questions which are already there. Sorry, there's just fifth question is actually, I don't agree with the fifth question. Ma'am, we'll just end the poll and then definitely we'll come to that discussion part, ma'am. While we're waiting for the poll, one of the things I wanted to make was that the steroid, why is it that steroid, it's now 8.5 years since I've come to, Shefali madam has got more experience than I have. Shefali madam, you have more experience than I have. It's only 8.5 years since I've come back to India. In the 8.5 years, I have seen a positive change with regards to how many people are taking up steroids. It seems so much more easier to convince patients to take steroids. And that is there, but let me tell you, like, we have been using steroids for the last, I have been last 4 decades since Dr. Kalra had started the neuromuscular clinic, and I've been in charge for 25 years now, and we have been giving. But point is, when I'll tell you why, when we had this ataluren and all these studies came up, for the ataluren trials, you had to have steroids for at least 1 year. There were so many patients which we had to wait for time, because all patients, because nonsense mutation is not that common. So we had to get patients who were being referred to us. Those who were being followed with us were on steroids. लेकिन जो बाहर से आए, we had to start them on steroids, and some patients we could not give because that COVID happened, and by the time they completed 1 year. So we have no problem, but then we are only the few. So we have to explain that standard of care. This is my point. This is my point. Yeah. So even in UK when I was working, we had patients who were on steroids for 20 years. Yeah. Even those who are non-ambulant. Yeah. We would tell them, "Arey bhai, hum steroids band kar dein," and they would say, "नहीं, नहीं doctor, and we are there very clear cut guidelines. जब non-ambulatory होते हैं, the dose has to be reduced and given. It is very clear, very clear guidelines. There is no problem about that. No, but patients compliance. We didn't have a problem with compliance. Doctor, and there's not a problem with compliance. I have a problem with doctors prescribing it.
It is I not agree that with you. I'm just agree saying with you. some mental problem block is in some that- doctors, and that is the point. We have to make the guidelines. So in the guidelines which you are also there, and in which Dr. Verma sir, usme we had just finished up on the new therapies na. Abhi next part of it is holistic standard of care of DMD ko discuss karna hai, to usme aa are jayega not- steroids the. We as doctors Yeah. are not taking care of the side effects of steroids and are not giving confidence to the patients that we can manage the side effects. इसीलिए ऐसा हो रहा है. नहीं पर अभी बढ़ रहा है अवेयरनेस है. वी आर सेइंग बिकॉज इवन इन द गाइडलाइंस व्हिच वी आर मेकिंग ना, इट इज देयर डॉक्टर एन, एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट कमिटी, एंड सर नोज कि अभी हमने नया वाला मेडिकेशन का ऊपर मेंशन किया. एंड आई ऑल्सो एक वन मैसेज आना चाहिए, वो क्लियर नहीं है कि जो डीएमडी के पेशेंट्स में ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन सर, मे बी अराउंड सर 25% में होगा. वर्मा सर क्यों करेक्ट मी, जिसमें डेफिनेटिव क्योर की बात है. एटल का जो नॉनसेंस म्यूटेशन और 51, 45, 53 का एग्जैक्ट प्रेवलेंस फिगर्स तो है नहीं ना सर कंट्री में कि कितना है. तो आप बताइए अराउंड 20 से 25% ही होंगे ना टोटल डीएमडी में अप्रोक्सीमेटली. हाँ नहीं, but we will not have a nationwide data. I'm saying that's what I'm saying. That's just extrapolating Western data is 14%, but 80% of DMD is skippable. 80% of DMD is skippable. But point is skippable after you have the ASOs, but you have those mutations. में तभी I was asking sir, because sir, how many percentage of them would be actually in India? Because from his experience, they are skippable, but we don't have those ASOs. They are, but what we are talking about is what are जिसका ट्रीटमेंट विद द ट्रीटमेंट दवाई अवेलेबल है. रिसर्च में बहुत कुछ हो सकता है when it is there. नहीं राइट डॉक्टर एन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेंशन जो अभी करंट है सर, अभी करंट का सर जो 45, 51, 53 है और उसके जो पेयर्स हैं, बिकॉज व्हाट इज अवेलेबल इन द ग्रुप्स दे आर समवेयर अराउंड 100 और 100 odd pairs in which can be amenable. So that must be sir how much person in India, if you feel from an Indian perspective of the genetics of our DMD patients. I'll just take 1 second. We have started the poll for the second डेटा है तो सही, पर अभी मैं ऑफ हैंड आपको नहीं बता सकता. सर नेक्स्ट वीक कर लेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. नेक्स्ट वीक कर लेंगे वो, बिकॉज दिस विल कंटिन्यू. रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया था ओके सर, पॉइंट को लेके. हाँ जी सर, अपना 1400-1500 पेशेंट जो हमने देखे हैं, हाँ जी सर, उनका डेटा एनालिसिस प्रेजेंट किया हुआ है. ये इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में छपा था. ओके सर, लुक इनटू इट एंड सर विल नेक्स्ट वीक वाले में कर लेंगे सर, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. बट वन मैसेज तो सर हम दे सकते हैं, all of them are not amenable and it is a small proportion, relatively small percent who are amenable currently, right? Yes, you are that right. should be all of them are not amenable. Sir, why I want to mention, क्योंकि I was seeing the patients of court cases. The problem is those court cases जो patient थे high court में, they were brought here, we assessed. उसमें से there were 3 patients, sir, 2 or 3 patients who were not amenable to therapy, but they were running around. Means then they, you know, so they should be aware कि वो है नहीं. Parents should also understand कि they should go to a pediatric neurologist, a geneticist and understand कि कौन से वाले currently amenable हैं. And वो जो आप कह रहे हो potentially amenable है, वो researchers have to look into it. So next week we have a session on research which Dr. Khadilkar is going to be there, you know, moderating, in which he'll be talking about how to go ahead research. And obviously Verma sir will have to be there. वो तो I will ensure sir to be there along with Dr. Khadilkar. Dr. Verma will be moderating. So and Dr. Anne, you wanted to add on to, you wanted to talk about the DMD and exercises. You can please tell about your protocol, because that was Priya Bhatta's protocol, what he was talking about, and Dr. Bhupender. So you can add on what you wanted. You made some comment on that. It has to be individualized. It is, yeah. Our protocol is that we found most of the patients overdoing and accelerating their disease by doing overdoing exercises. We always tell them each patient is different, but if they have aches and pains, that means muscles are breaking down, do not push them. Yeah. And we do not advocate doing exercises regularly. We advocate doing stretches regularly. Yeah. We only advocate non-eccentric exercises, aerobic exercises, and we don't tell them come to us frequently. We specifically tell them don't. They come from far away, so we usually have online sessions with the physiotherapist locally and tell them क्या करना क्या नहीं करना भाई. Yeah, and that's what I think it was told कि वो stretching है जो twice in a day बोला जा रहा था. That's what Priya Bhatta was saying. That is what he was talking about. No exercises. Yeah, and one more thing, and this is important कि जो adding braces and all can cause more disuse atrophy, more restriction of lung disease. That we have to be careful in deciding. So which is why
which is why DMD ka splinting is different from SMA ka Of splinting. course. DMD ka we only do in the night, and DMD children should not get scoliosis. If they get scoliosis, then we failed. That is As true. doctors, we failed. That's true. So I'm just saying it will have to be individualized. I mean, in that situation, and it's a bit different for both. But the only thing they have to keep in mind कि parents को अपने आप नहीं शुरू करना है. What I meant was, it has to be trained professionally. And as Priyabhadra was saying, that OTPT along with the orthotist and all will be an orthopedician can decide collectively. And I think what is important, एक message है, I feel everybody is sitting in silos. अलग अलग देखते हैं बच्चे को in, so it has to be even if it's one clinic, people are sitting in their chambers. Matlab each patient ka final decision, I think the treating pediatric neurologists have to see after inputs from all of them. I think that the final decision and final plan should be taken up by the pediatric neurologist who is giving the, treating these patients. That's what I feel it's required. Any other questions we have? I don't think any Q&A लगाएंगे दोबारा please. Anything else? Yeah, there were new guidelines. We had discussed the new guidelines, last week also, and it's there. The lawyer groups. Yeah, we'll be having probably getting a lawyer on board. One of these, I've requested a lawyer. And in America, gene therapy or skipping is suitable for Indian fully genetic nation. Sir, Verma sir, this is a question. Sir, ये लिखा है Miss Sunil Kumar. I do not know parent है या professional. Is American gene therapy or skipping, exon skipping, suitable for Indian fully genetic nature of Indian patients from American? Is it okay? मतलब he's saying हम लोग follow कर रहे हैं same दवाई, हम genetically थोड़े different है. So he wants an answer. I thought that you are the best person to answer this question. Actually, मैं डार्ट के साथ थोड़ा involved था. So they sequence the particular patient. They sequence the exon and the intron boundaries and see the sequence के अगर तो वो regular reference ही है, अगर कोई different नहीं है usual से, then that they will work. But अगर उसका sequence वहाँ different है, then it may not work, because ultimately we are aiming at that point. And so that way I think वो डार्ट की policy better है कि you sequence that particular individual and see कि उसके लिए ये particular antisense काम करेगी या नहीं करेगी. तो लेकिन जो अमेरिकन के कॉकेशियन जो पॉपुलेशन है, I think they are not testing every patient. They just give the thing they keeps working. So yeah, but maybe it needs to be examined little more to check with the company कि भाई आप लोग ये सीक्वेंस करते हो या नहीं करते in every patient. यहाँ साइन करना. Okay. Thank you, sir. Sir, if there's no other questions left, so we'll close and we all the recordings will be available on YouTube, and request all of you to help us join and improve the life of these patients. और वर्मा सर आपको मैं सर I'll talk to you later, but आपको एक request है कि अगले सारे जो 3rd September तक के हैं उसमें, because you are one person who is the basically godfather of all this, and I think would be really blessed, and it'll be important for expressing this advocacy, because we have these issues which will be raising, and I think you have the maximum perspective about the whole thing, sir, of decades and decades of experience, and building us students also in the wrong way. So last final closing remarks from you, sir. No, I think it's a very good initiative that you have taken, and of course we have had many discussions on this. बहुत discussion हुई हैं, लेकिन जितनी discussion करें कम है. ये we have to enforce this again and again, क्योंकि ये लोग हर एक की memory थोड़ी कम होती है और भूल भी जाते हैं, तो ये reinforcement भी बहुत जरूरी है, and बहुत अच्छा ये काम किया आपने और ये कर रहे हो. Thank you. Congratulations for this effort. थैंक यू सर. ये ग्लोबल जीन्स का फाइनेंशियल एडवोकेसी का ग्रांट है सर जो मिला है, तो हमारे को ये 3rd September तक ये सारे सीरीज हमने ऑल एस्पेक्ट्स कवरिंग, अब फाइनेंसेस विल बी टॉक्ड अबाउट मोर. थैंक यू सो मच. Thanks Dr. Ann, and thanks everybody. Dr. Kakuli for housekeeping. Thank you everyone.
We'll have the next session tomorrow, starting at the same time, 10 o'clock. 10 o'clock, and everyone can join and kindly circulate this so that more people can benefit from this, because we'll have many questions and many panels and many people who would be joining and focusing on the financial aspect of getting the treatment, which is definitely a very big issue in India, and people are focusing. तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये सर्कुलेट करें, जूम लिंक जो शेयर किया हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट ले सके. उसी के साथ आज का सेशन यहीं खत्म होता Yeah, है. and the YouTube link also, because Zoom के साथ ये live stream हो रहा है YouTube में, तो उनका YouTube में तो रहेगा ही for anybody who is not attended. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Anne. Thank you, Vipsa. Thank you very much. Thank you. Thanks. Bye. Bye. Thanks. Bye.